Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और you know what? मतलब काफी लोग सोच रहे होंगे भाई I didn't come out with a normal Chelsea का review, normal EPL review और general entire review because कल इतना सारा ड्रामा था ना, मतलब इतने सारे मैचेस थे, वो तो है ही हर सैटरडे के जैसे, लेकिन इतने सारे टॉकिंग पॉइंट्स थे, तो आई थॉट इट वोंट बी फेयर बाय मी जस्ट कमिंग आउट विद अ 10 मिनट वीडियो एंड जस्ट टेलिंग माय व्यूज. तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा पॉइंट बाय पॉइंट, और उसके लिए आई हैव ऑब्वियसली श्रेय इन द हाउस. तो श्रेय, वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. हाउ वाज योर सैटरडे? So happy to be back again and thank you Ankit bhai to have me on. It's always a pleasure to be with you Ankit bhai and chat को भी बहुत बहुत हेलो आज. आई होप चैट का दिन नथिंग बट एट यूनिट बहुत खुश होएगी क्योंकि यूनाइटेड जीत रही है मैचेस जो हम पिछले साल नहीं देख रहे. तो बिग अप टू देम एज वेल. आई थिंक ओवरऑल अंकित भाई येस्टरडे जो आई थिंक सैटरडे अंकित भाई मैंने ऐसा सैटरडे नहीं देखा बहुत टाइम तक कि लाइक जो हुआ है लाइक मैं अंकित भाई मैच देख रहा था चेल्सी लेस्टर का एंड मैं पैलेस का स्कोर देख रहा था. मैंने कहा वाओ यार मतलब आज चेल्सी जीतेगी, विल क्लोज द गैप टू सिटी. और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सिटी कवर कर देगी वो गैप, 4-2 जीत जाएगी. उसके बाद मैंने हमेशा सबको कहा था, मैंने चार्ट्स पे भी कहा था कि आरसी फुलहाम को कम मत समझो एंड आर्सेनल मैच जीती बट अच्छा मैच है फुटबॉल का. साथ ही साथ अंकित भाई लिवरपूल व्हाट दे डिड वाज लाइक मैंने नहीं सोचा था. मैंने सोचा नहीं था कि वील सी समथिंग. मैं तो हैरान हूं 10-0 नहीं करा लिवरपूल ने बिकॉज रिकॉर्ड बन जाता 9-0 आई थिंक साउथहैम्पटन जैसा वो फेयरवेल कर दिया यूनाइटेड ने करा था. और उसके बाद अंकित मैं ये कहूंगा कि दूसरे जैसे मैचेस हुए थे साउथहैम्पटन यूनाइटेड का वो भी बहुत अच्छा हुआ था. जिस तरह आई थिंक साउथहैम्पटन ने स्टार्ट करा यूनाइटेड फिनिश करा. तो बिग सैटरडे एंड आई थिंक ये है कि इस संडे बड़ी गेम्स नहीं है बट आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू नॉटिंघम टॉटनहम. बिल्कुल बिल्कुल. और बाय द वे स्पेशल शाउट आउट जाता है इवन टू मानव. बाय द वे मानव नॉट ओनली मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एज वेल एज डेरेन जो भी मेंबर अपना, लेकिन एवरीवन शाउट आउट भी. लू मैन्यू हो गया, कुमार यशस्वी हो गया है, मुजाहिद खान हो गए, मटाटा यूनाइटेड, दिव्यांशु, राहुल, एवरीवन एवरीवन बिग शाउट आउट. भाई एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मानव स्पेशल शाउट आउट है बिकॉज मानव हैज डन सम एनालिसिस फॉर अ स्पेशल एनालिसिस फॉर मैन सिटी. तो आई विल कम टू दैट एब्सोल्युटली. जो मानव ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो वील सर्टनली कम टू दैट. लेकिन ऑब्वियसली बीइंग हैविंग श्रेय इन द हाउस, और यस बाय द वे पीपल हमेशा के जगह लाइक कर दीजिए सो दैट वी हैव मोर पीपल. यूट्यूब याद दिलाए सब लोगों की भाई हम भी लाइव है. तो डेफिनेटली डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन. और क्विक अनाउंसमेंट इन बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैं बोल रहा हूँ, वी आर आल्सो गोइंग टू बी लाइव फॉर द वॉच लॉन्ग मोस्टली अराउंड 7 आज फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस अदर चैनल. और अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब टू दैट चैनल, प्लीज डू दैट. सेम गोस फॉर श्रेय एफसी. तो शुरू तो डेफिनेटली चेल्सी से ही करेंगे, लेकिन विल कम टू एवरी मैच, ठीक है, अक्रॉस लीग्स हम डेफिनेटली आएंगे. तो भाई यहाँ पर मैं क्विकली आई विल शेयर पीपीटी व्हिच विल टेल यू सर्टेन मोमेंट्स. तो भाई सबसे पहले तो आई नो वी वन कम फ्रॉम बिहाइंड बिकॉज टेक्निकली वी वर वन मैन डाउन. तो 10 मैन चेल्सी बीटिंग लेस्टर एट होम एंड आउट ऑफ फॉर्म लेस्टर, यू वुड से ओके फाइन, इट्स ओके, इट्स बेटर देन ओके. लेकिन the fact that इतनी जल्दी रेड कार्ड हुआ था ना, आई नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रेड कार्ड, दैट गैलेगर इनिशियली जो चैलेंज था एंड देन इट मूव टू रेड कार्ड और सेकंड चैलेंज. तो श्रेय आई वुड लाइक टू आस्क यू यार, गैलेगर इज इट अ फैक्ट कि उसको पता था कि 2 ही मैच है उसके पास क्योंकि कोवाचिच विल बी बैक एंड ही गेव हिज एक्स्ट्रा एफर्ट, और द फैक्ट दैट ही इज सिंपली नॉट अ नंबर 6? अंकित भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूंगा जैसे कॉनर गैलेगर है. आई थिंक आपने जो फर्स्ट पॉइंट कहा था ना वो पैशन की. आई थिंक वो फर्स्ट मैच आई थिंक वो स्टैमफोर्ड ब्रिज के सामने क्योंकि अंकित भाई हमने इनको पैलेस में देखा था. लाइक एक तो मैं ये कहूंगा आई लव ट्यूकल. ट्यूकल तो मेरे फेवरेट मैनेजर है मतलब चेल्सी के एंड आई लव हिम टू बिट्स बट सॉरी टू से ट्यूकल इज नॉट यूजिंग हिम द वे ही शुड बी. आई थिंक वो नंबर 6 कभी भी नहीं है, वो फेवरेट प्लेयर है ही नहीं. तो जो प्लेयर वैसे आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है वो मिस्टेक्स करेगा ही करेगा. पैलेस में पैट्रिक वेरा ने जो कॉनर गैलेगर को रोल दिया था वो था अटैकिंग प्ले मेकर का, अटैकिंग मिडफील्डर का. तो हमेशा गैलेगर हमारी साइड पे आते थे, अटैकिंग ड्यूटीज में आते थे. एंड आपने देखा होगा गैलेगर अटैकिंगली अच्छा करते हैं जब फाइनल बॉक्स में होते हैं. तो ये उनकी पोजीशन है भी नहीं. तो आई थिंक ट्यूकल इज यूजिंग हिम रॉन्गली. अब या तो मैनेजर को हमसे मैं ये कहूंगा ट्यूकल को हमसे ज्यादा ही पता है, तो आई होप कि वो जो कर रहे हैं सही है बट ये है एट द मोमेंट वो नहीं काम कर रहा. हाँ कल के लिए मैं ये बोलूंगा कॉनर गैलेगर शुड टेक ब्लेम फॉर द फर्स्ट कार्ड. कई बार ये होता है ना कि एड्रेनलाइन बढ़ जाती है आई थिंक फैंस के सामने. मेरा फर्स्ट गेम फैमिली भी आई होगी आई थिंक, नियर रिलेटिव्स भी आई होगी देखने के लिए. वो ड्रीम जो बॉय की होती है एक चेल्सी से बचपन देखे. अंकित भाई हम दोनों भी चेल्सी फैंस हैं. अगर हमें कभी खेलने को चांस मिले चेल्सी के बारे में, लेट अलोन मान लो किसी प्लेयर को इंटरव्यू करने का मिले, हम भी शायद रश कर देंगे चीजें, इतनी बिल्कुल बिल्कुल. एक्साइटमेंट में. अरे बट स्टेडियम के आसपास भी रहूं तो मैं तो झपट जाऊंगा यार, कोई भी प्लेयर कोई है तो. एब्सोल्युटली दैट्स वन थिंग, एवरीवन पीपल कैन रिलेट टू दैट बिकॉज ही इज वेरी यंग. लेकिन देयर इज अ पॉइंट, ओके, बिफोर कमिंग टू द पॉइंट मैं ये भी बोलना चाहूंगा, और यस वील बी रेटिंग एवरी काइंड ऑफ नॉट एवरी प्लेयर लेकिन एटली एवरी क्लब परफॉर्मेंस. क्या मैं बोल रहा हूँ यार,
भाई ये कुकुरेया, तो यार देखिए, द रीजन मैं कुकुरेया हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज जो सेकंड येलो कार्ड था, एज मच एज गैलेगर वेंट फॉर द चैलेंज, व्हाट डू यू थिंक, राइट? कुकुरेया प्लेइंग दैट बॉल इन अ स्पेस जहां पर खाली कॉनर गैलेगर थे, सो डोंट यू थिंक कुकुरेया इज टू ब्लेम? नॉट जस्ट दैट, मैं तो जनरली बोलता हूँ फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस, जनरली मैं बोल रहा, मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, श्रेय प्रॉब्ली नो अबाउट इट। Everyone, don't you agree that first half में Kukurea made a bit too many mistakes? Like all the attacks जो हो रहे थे finally goes to the left hand side. तो Kukurea एक pass खेल रहे थे and it was break of attack. मतलब what do you think about आई Kukurea's performance first half? आई अंकल मिस्टेक आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा है, इट हैज टू बी सेड। आई थिंक मैं ये कहूंगा बेनिफिट ऑफ डाउट है, न्यू साइनिंग है एंड आई स्टिल ट्रस्ट हिम। कई बार नई साइड में आए हैं, सो इट टेक्स देम टाइम टू एडजस्ट। बट ये है कि कुकुरेला से रेड कार्ड की मिस्टेक नहीं करी। अगर लोगों को याद होगा 47th मिनट कुछ 50 सेकंड्स थे जब हाफ टाइम होने वाला था, वहीं पे लेस्टर सिटी ने एक बॉल डाली थी जहां पे थियागो सिल्वा ने हेडर करा। कुकुरेला को मार्क करना चाहिए था प्लेयर राइट साइड पे, कुकुरेला बिल्कुल चिपके हुए थे थियागो सिल्वा के साथ। और आपको याद होगा मेंडी ने मैच के लास्ट सेकंड पे एक सेव करा था, which should have been Chelsea 0, Leicester 1, और वहां पे कुकुरेला आउट ऑफ पोजीशन थे। अगर वो गोल हो जाता तो मैच बदल जाता। 10 men 1-0 डाउन, लेस्टर पार्क द बस कर रही थी एंड आई थिंक वी वुड हैव बीन इन ट्रबल। आई थिंक कुकुरेला सारी गेम्स में मिस्टेक्स दिखी है। आई थिंक सेट पीस तो अंकित भाई मैं बात नहीं करना चाहता, सिर्फ कुकुरेला नहीं, आई थिंक माउंट ने भी कल जो कॉर्नर किक्स लिए वाज एन एब्सोल्यूट ऑफुल कॉर्नर किक्स। इवन लेस्टर ने जो कॉर्नर किक्स लिए, But लाइक चेल्सी, आई Shreya, थिंक ट्यूकल why is बहुत एंग्री है। Kukurea taking all the set pieces? I know काफी लोग बोल रहे हैं उसका passing is very good. By the way, I'll come to that. Second half Kukurea was awesome. Okay, there are two ways. और उसका मैं reason मैं बताऊंगा. Just give me a few more slides or a few more minutes. And yes, by the way, people, भाई 20 लोग हैं भाई, आराम से हम 60 लोग हो सकते हैं भाई. We can triple this number. Let's like this stream so that we have more people in, because we are literally going to be talking entire Premier League, entire Serie A, entire Bundesliga, of course La Liga में भी या तो Real Betis का मैच था. We'll cover everything. एंड ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड टू आज के मैचेस भी पॉसिबल। तो शाउट आउट जाता है फुटबॉल कमेंट को भी, मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, ये भी आने वाले थे लेकिन इज आउटसाइड टुडे, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पर अंकित भैया, डोंट यू थिंक माउंट शुड बी ड्रॉप्ड? ही वेंट एंड वी प्लेड बेटर। आई थिंक वही है, we'll come to the substitutions as much as possible. Chelsea need a proper physical defensive midfield like Phillips or Rice. Even Frankie de Jong won't be a good addition to Chelsea. Again, मैंने एक्चुअली दिखाया नहीं, वी एक्चुअली स्टार्टेड इन अ स्ट्रेंज फॉर्मेशन इन इटसेल्फ। और बहुत अच्छा पॉइंट है दिव्यांशु का यहाँ पर, मैं एक सेकंड के लिए, और बिफोर गोइंग टू द फॉर्मेशन यहाँ पर मैं दिखा रहा था भाई, ये चेल्सी फैन ने एक डाला है यार। ये इमेजिन, आपको अगर देखना ना कैसे आपको कार्डियो करना है 25 मिनट का प्रॉपर, तो वो है गैलेगर। एज मच एज इट्स पन, आई नो, बेचारे गैलेगर को मजाक बना दिया, लेकिन द फैक्ट इज 25 मिनट इतना भागे, इतना बेसिकली किया है ना, came to nothing. Okay, finally he got a red card. But again, let me actually try and get up the Chelsea and Leicester lineups. ठीक है, जो हुए थे, and we'll quickly analyze on that, और जो बोल रहे हैं Derain as well as Divyanshu. So देखिए, in terms of the setting, तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज। अब टेक्निकली आप बोल सकते हो वी प्लेड विद अ 4-2-2-2, राइट? लेकिन मतलब इन माय ओपिनियन इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ 4-4-2 विद लॉफ्टस-चीक प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड स्टिल माउंट, लेकिन ही इज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट साइड प्लेयर। तो अगेन श्रेय, माउंट आल्सो हैड अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फर्स्ट हाफ, नॉट जस्ट द फ्री किक्स ऑफ कुकरे एंड माउंट, बट जनरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टोटल मतलब प्रॉब्लम थी। स्टर्लिंग के पास बॉल नहीं रीच करी थी इन द फर्स्ट हाफ। सो what is the solution? Like, is it obvious that Pulisic is your answer? Left hand side में आने के बाद भी Pulisic did not play on the left hand side. मतलब what will it take for Tuchel to understand भाई Pulisic एक naturally gifted left hand side forward है, not what he used to be in Dortmund. Why is it that he's doing that? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित भाई, आई एम वेरी वेरी स्टन्ड कि क्यों नहीं चांस मिल रही, एटलीस्ट एक चांस क्यों नहीं मिल रही प्यूलिसिच को। बिकॉज मैं पहले खुद एग्री करता था ट्यूकल के साथ कि प्यूलिसिच बहुत इनकंसिस्टेंट है, बट नाउ आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। पर मैं ये भी कहूंगा अंकित भाई कि जो मेरे को माउंट की चेल्सी में 3-4-3 में बेस्ट परफॉर्मेंसेस याद आती है, माउंट हमेशा चेल्सी के लिए अच्छा खेलते हैं लेफ्ट विंग पे जब चिलवेल साथ में होते हैं। मैंने ये चीज बहुत देखी है कि जब भी चिलवेल खेलते हैं माउंट की गेम अपलिफ्ट हो जाती है सडनली। आई थिंक अगर हम जो माउंट का बेस्ट रन था अंकित भाई, अगर हमको चेल्सी शर्ट में याद है ट्यूकल की मैनेजमेंट के अंडर, वो था लास्ट ईयर मैं नहीं मानूंगा अच्छा क्या था माउंट का। आई थिंक गोल जरूर थे बट परफॉर्मेंसेस वो नहीं थी। आई थिंक मैं कहूंगा जो हमारा चैंपियंस लीग का रन था उस टाइम पे, जब चिलवेल लेफ्ट पे होते थे, जेम्स राइट पे होते थे, माउंट हावर्स और वर्नर फ्रंट थ्री होते थे, हमने बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखी थी मेसन माउंट की। आई थिंक 2 मैचेस पोर्टो के साथ बहुत अच्छा खेले, 2 मैचेस रियल के साथ बहुत अच्छा खेले, 1 मैच सिटी के साथ और 2 एटलेटिको के साथ जब चिलवेल साथ में थे। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है माउंट का अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही कुकुरेला के साथ, तो कहीं ना कहीं
माउंट, हमें ये पता है माउंट एक प्रॉपर विंगर नहीं है, ना ही वो प्रॉपर्ली ड्रिबल कर सकते हैं, लाइक अच्छी ड्रिबल है बट नॉट एट द लेवल जो आपको चाहिए एक प्रॉपर विंगर से। जैसे अब हम आर्सेनल का देख रहे हैं, आर्सेनल के पास है मार्टिनेली, आर्सेनल के पास अभी अगर आप देखोगे मार्टिनेली एक ट्रू विंगर लगता है आपको, जिस तरह उनकी पेस है, जिस तरह द वे दे आर प्लेइंग, व्हिच इज वेरी वेरी गुड टू सी इन माय ओपिनियन। साथ ही ओडेगार्ड है जो क्रिएटिव ड्यूटी कर रहा है। आई थिंक माउंट ना अंकल में जितना मुझे लगता है बीच का प्लेयर है, नाइदर ही इज वेरी क्रिएटिव, नाइदर ही इज अ ट्रू विंगर, वो बीच के है। ही इज अ प्लेयर जो आपको प्रेसिंग भी देगा, जो आजकल के मैनेजर्स को बहुत पसंद है। आई थिंक उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली बॉक्स में, एंड जिस तरह डिफरेंट काम करते हैं अंकित भाई। साथ ही साथ वो मेरे को जैसे एक होता है ना, जैसे ब्रूनो के साथ फीलिंग आती थी एक शैडो स्ट्राइकर वाली, माउंट के साथ मुझे एक शैडो स्ट्राइकर वाली चीज आती है। हमें अभी भी एक प्लेयर चाहिए जो क्रिएट कर सकता है, बट अब वही है कि अगर मैंने उस दिन हावर्स देखिए, मैं सच कहूंगा माउंट को नहीं ड्रॉप होना चाहिए, इन रियलिटी इट शुड बी हावर्स हु शुड बी ड्रॉप्ड। पर हावर्स का जो स्टार्ट आया था अंकित भाई, आपने ट्विटर पे देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द बॉल रन्स, मोस्ट रन्स, सबसे ज्यादा किलोमीटर कवर करते हैं। अब वही पे मुझे वरी होती है कि क्या मैं तो देखो एक सिंपल फैन हूँ जो टीवी ऑन करता हूँ, देखता हूँ, टीम हारती है तो रोता हूँ, टीम जीतती है तो सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन शायद मैं उस तरीके से ना एनालाइज कर पा रहा हूँ जिस तरह मैं हमारे मैनेजर को पता, क्या पता हावर्स कोई काम करते हो जो हमें ना दिखता हो पिच पे टीवी से, जो शायद मैनेजर को अच्छा लगता हो। बट एट सम लेवल हावर्स जो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है, मैं भी फुटबॉल देख रहा हूँ 13 सालों से, एज अ स्ट्राइकर अंकित भाई वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज है। माउंट अभी भी मैं चाहूंगा स्टार्टिंग लेवल में रहे, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें दिखाना पड़ेगा कि चेल्सी इज अ प्लेस वे यू हैव टू अर्न योर प्लेस। प्यूलिसिच को चांस मिलनी चाहिए, एंड अब ओबामेंग आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो गॉर्डन भी आ रही है शायद, तो अब कंपटीशन बढ़ना चाहिए, एंड आई थिंक अब शायद एक्साइटिंग हो सकता है। जैसे वर्नर गए ना कि भाई वर्नर और जियाक का जाने का रूमर्स है, वर्नर जा चुके हैं, हाकिम जियाक जाने वाले हैं। आई थिंक प्लेयर्स में ना वो कंपटीशन ही रह गया, माउंट सबको लगता है कि दे आर फॉर एवर गोना प्ले, तो आई थिंक हमें वी हैव टू मेक देम स्ट्रेट इन माय ओपिनियन। अंकित भाई आपकी आवाज नहीं आ रही अंकित भाई। ओके, आई थिंक मैं म्यूट पर था एज ऑलवेज। हाँ, कोई नहीं, थैंक्स यार। या एंड जैसे बोल रहे पर ये मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन इनफ, एंड आई डोंट नो व्हाट दे जेलस ऑफ, क्योंकि यार आई हैव नॉट रीच्ड 1-2 मिलियन अभी तक, तो होपफुली व्हेन आई रीच 1-2 मिलियन आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट थैंक्स लुमान्यू फॉर जस्ट सेइंग दैट। वेल अंकित भैया, ईयर 2040 चेल्सी स्टिल नॉट अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद किससे बोल रहा है आई डोंट नो, बट एनीवे सर लॉफ्टस-चीक की जगह हैवर्ट्स को खेलना चाहिए था, और जहां हैवर्ट्स खेल रहा था वहां पुलिसिक शुड हैव प्लेड, जस्ट माय व्यूज, फेयर इनफ आशीष। एंड यहाँ पर देखते हैं व्हाई चेल्सी नॉट गोइंग फॉर रूबन नेवेस, डेफिनेटली अपग्रेड ऑन जॉर्जिनियो, मोस्ट ऑफ टाइम्स कांटे इज इंजर्ड। मतलब वही है, आप देखिए अर्नब, अगर आप आज के दिन में देखिए ना, चेल्सी हैव सो मेनी मिडफील्डर्स, वी डोंट हैव टेकर्स फॉर अ गिलमोर, यू नो, बार्कली ऑफ द लाइक, सो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मिडफील्डर्स, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम दैट थॉमस टुचेल has highlighted, that we cannot get rid, we have so many players, how do we fit them in? So it's a squad after all, but I'm sure that they want De Jong as well, the best midfielders. Surprised that RLC played better than Georgie and Gallagher. Yes, RLC again. I am glad that जब बाद में after sending off he was moved to midfield proper. For a change, after a long time, I'm seeing after last season का Juventus का game, उसके बाद में वो खेला है अच्छा, तो I am really really glad. And yes, people, let's get to 50 likes absolutely, and in fact, let's get to 100 likes so that ज़्यादा लोग आए. And yes, like I said, we are discussing all the matches. थोड़ा डिटेल में कर रहे, इसलिए लाइव स्ट्रीम कर रहे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं निकाला, दैट्स एंटायर पॉइंट, राइट? इधर के गिलमोर और गिव आम्पुडो चांस डीएम, आम्पुडो वुड हैव ब्रिलियंट। मैंने एली वाज इन द हाउस, बाय द वे, शाउट आउट एली एज वेल, एंड वी डिस्कस्ड दैट द फैक्ट दैट आम्पुडो ब्रिंग्स दैट एक एलिमेंट है ना, हार्ड टैकलिंग, जो है which Gallagher probably wants to do, but he's not a natural at that compared to maybe an Ampadu. Plus वो अच्छा पासर है, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा रेड कार्ड प्रोन रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा इशू है. गॉर्डन isn't coming, I believe as well, absolutely, that's true. लेकिन एक क्विक चीज मैं बोलना चाहूंगा. देखिए यहाँ पर आई थिंक श्रेय has already shown there was this one save before half time which kind of kept us in the game really, and we were already down to 10 men. Remember 28 मिनट था जब गैलेगर वेंट ऑफ, और वो 28 का क्यों महत्व मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि भाई 28 मिनट के हिसाब से 28 नंबर जर्सी आ गया, और दैट इज एस्पिलिक्वेटा. व्हेन हाफ टाइम में चेंज किया टूकल ने, और यहाँ पर आई हैव टू गिव टूकल द थम्स अप यार, बिग थम्स अप फॉर टूकल, क्योंकि भाई everyone said that Aspilicueta has finished, what not, this that, हमें जाना चाहिए for the back, which we probably started with. लेकिन भाई जब Aspilicueta आए, उससे क्या हुआ, और वहीं पे पॉइंट आने वाला जो श्रेय बोल रहे एंड एज वेल एज चैट बोल रही थी कि Aspilicueta आने के बाद what happened is Cucurella kind of got freed up. Cucurella, it was Reece James obviously एक साइड में फ्री अप हो गया, Cucurella on the other side got freed up. तो वहां पर दोनों को kind of wing back में that kind of space मिला up front, तो वहां पर our attacking prowess increased even though we were 10 men, क्योंकि
Loftus-Cheek was that physical man in the center of the park, so that really helped. So tactically, it was very good from Tuchel with 10 men. Ab wohi same thing with 11 men can we do is a big question. Or will that throw the question, Shrey, that after this, is it also an indication that we are still much more comfortable with 5 at the back? We might actually continue with that. क्या बोल रहे हो? आई थिंक एब्सोल्युटली एग्रीड अंकित भाई जैसे आपने अभी बात करी थी थोड़ा इससे पहले आपने जो फॉर्मेशन दिखाई थी चेल्सी की 4-4-2 हम उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अंकित भाई कहीं ना कहीं हमारी टीम को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि जॉर्जिनियो थियागो सिल्वा एज हैव विद थियागो सिल्वा बेस्ट डिफेंडर है बट फिर भी कवर चाहिए आई थिंक अंकित भाई बस इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि वेरी हैप्पी टू सी एसपी प्ले मैंने याद है मैं अंकित भाई के चैनल पे पहले भी आया था मेरे को सिर्फ ये डाउट थी कि जब एक प्लेयर बारसा से लिंक्ड है कहीं ना कहीं वहां पे वो जाना चाहते हैं तो शायद कहीं ना दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है अब अच्छी बात है वो सॉल्व हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड वो हमारे लीडर है एंड आई थिंक वी नीड इट तो अच्छी परफॉर्मेंस है अंकित भाई सो हैप्पी टू सी एसपी प्ले वेल ट्यूकल ने भी अंकित भाई बहुत अच्छा शिफ्ट करा एंड एडवर्ड मेंडी को बिग अप जाते हैं एडवर्ड मेंडी मेड अ बिग मिस्टेक लास्ट वीक बट मैं अभी भी कहूंगा मैं इसलिए उनको कैप्पा के ऊपर हमेशा पुट करूंगा चाहे कैप्पा जितने अच्छे स्वीपर कीपर हो कि सेव ज्यादा जरूरी है मेंडी को सिर्फ ये है कि बॉल ऊपर फेंक दे मिस्टेक्स ना करे एंड गुड सेव सो अंकित भाई हैप्पी विद बोथ ऑफ देम एंड फाइनली वी गॉट द विन एंड बिग अप टू एसपी एज वेल क्योंकि सबसे ज्यादा अंडररेट करा जाता है एंड इवन जस्ट लास्ट बिग अप टू चलोबा ही प्लेड वेल इन माय ओपिनियन एक्चुअली एक स्टार्ट है और यस इस गोल पर आएंगे लेकिन एवरीवन इन द चैट मतलब दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हेनेवर चालोबा हैज स्टार्टेड फॉर चेल्सी वी हैव नॉट लॉस्ट अ प्रीमियर लीग गेम सिंपल एज दैट तो दैट इज लाइक एक्सीलेंट मैन आई थिंक इट्स अबाउट 14 विंस एंड 4 ड्रॉज और समथिंग लाइक दैट वाओ मतलब आप देखिए मतलब मे बी अ लकी एलिमेंट आई डोंट नो मतलब कुछ तो है मतलब आप बोलिए चालोबा व्हाट इज ही ब्रिंग हाँ ही हैड वन और टू मिस्टेक्स मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ही वाज टोटली क्लीन लेकिन ही हैड वन और टू मिस्टेक्स प्रॉपर लेकिन वहां पर थियागो सिल्वा एंड मेंडी लाइक यू सेड श्रे कवर्ड देम अप लेकिन भाई इस मोमेंट में मे बी आप बोल सकते हो कुकुरेया डिड वेल बिकॉज वो ये द मोमेंट एसपी केम कुकुरेया वेंट लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक में बेसिकली क्या होता है यू ही कैन वॉर्म ऑन लिटिल बिट फर्दर और वहां से बेसिकली धीरे से कट बैक किया स्टर्लिंग एक स्टेप ओवर किया और भाई स्टर्लिंग ने चिप किया इतना बोलना पड़ेगा इट गॉट अ डिफ्लेक्शन as much as you think it was not लेकिन it was absolutely a very good goal so मतलब again people who were saying I know that again shout out है maybe a little bit personal लेकिन lot of Man City fans especially said that okay Sterling is shit I was like man he's the second highest goal scorer plus assist maker in the Premier League आप उसको shit कैसे बोल सकते हो मतलब I know he's not ideal मैं ये भी बोलूंगा वापस से लेकिन that finish was not easy he did the same finish last weekend लेकिन वही है that was offside at that time यहाँ पर all people have joined by the way everyone do like the stream do not forget so that we have more people joining again there are 20 people watching we can easily have 60-70 people watching pretty much sure it is a Sunday afternoon I know काफी लोग रेस्ट कर रहे हैं भाई लेकिन सब लोग आ जाओ बिकॉज आपके हर एक क्लब के बारे में बात करेंगे तो we'll certainly discuss and we'll take your opinion as well hello everyone दानिश बोल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे दानिश बिल्कुल if Tuchel wants to play 4-2-2 he should closely watch the FIFA series at Almighty Sports Plus अरे भाई मानव thanks भाई by the way वही मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन खेली थी उससे याद आया next match we'll have both top defenders in back line Fofana and Bahubali along with Reece on wings so Chelsea will be back stronger Skova is back to fair enough I want to see Sterling Oba Havertz trio well अभी Oba आए नहीं यार I hope आ जाए बस that's the biggest point because literally 3 दिन बाकी है अभी आप देखिए वो ये काफी लोग बोल रहे हैं Havertz is number 10 is more suited लेकिन वो ये we don't play that formation विशेष anyway let's see तो this goal was awesome मतलब no two ways about it but I think ये एक talking point था we went ahead with 10 men and then this happened मतलब lot of neutrals वापस से बोले थे Chelsea were lucky not to basically get that goal conceded हावी बांस वाज adjust कि वो उन्होंने किया है लेकिन इस एंगल से देखिए तो clearly before Mendy touches the ball Barnes has hit his hand so that is why it is a foul everyone in the chat आप बोलिए if you agree or not Shrey what do you have to say about this आई थिंक अंकित भाई वहीं पे देखने पे लग रहा था आई थिंक इस फाउल है स्पेशली आई थिंक जिस तरह ये रिप्ले भी बट वैसे भी आई थिंक ही वाज मैन हैंडलिंग मेंडी तो अगर आप कीपर को मैन हैंडल कर रहे हैं तो आई थिंक यू आर नॉट एबल टू डू राइट एंड अंकित भाई अगर ये होता भी चलो मैं 2 मिनट के बाद डिसीजन सही है आई थिंक आई एम सॉरी बट आई थिंक ऑफसाइड कॉल चेल्सी के खिलाफ फिर से गलत हुई है मैंने सेम गोल साउथहैम्पटन यूनाइटेड मैच में देखा था जो हमारे में रूल आउट हुआ तो वो हेयर लाइन कहां से जाता है यार हेयर लाइन चेल्सी के साथ आती है लेकिन अगेन कैन वी डिबेट दैट श्रेय क्योंकि स्क्रीन पर क्लियरली दिखा रहे रेड लाइन दिखा रहे हैं तो उसको हम डिबेट नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने उसका पिक्चर नहीं डाला टू बी ऑनेस्ट बट यू हैव अ पॉइंट कि यार जो नेकेड आई देखता है वो तो देख रहा है भाई क्लियरली ऑन साइड या लेवल है वही सेम चीज लास्ट मैच में दूसरे टीम्स के साथ ऑन साइड किया जाता है एंड यू हैव अ पॉइंट एब्सोल्युटली फेयर इनफ एंड यहाँ पर सिटी फैन सेइंग स्टर्लिंग अ बिट या मतलब वही है मेरे लिए मानव एब्सोल्युटली मतलब आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बट लॉट ऑफ देम डिड से मानव एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट यू ब्रो लेकिन
a question to you. If Isaac, who scored just 10 goals last season, could cost 70 million, then what would be 2012 Messi's price now, where he scored 91 goals? Arey yaar, aise, you know what? It's not plain maths. That is the whole point about football. It's not plain maths. It also depends upon, what your position, value, the team proposition of the team is, where you are in your career, and of course, basically your agent. How do they negotiate? A lot of things come into it, Divyanshu, but that's what it is. Havertz offside वही है CFC Blues. That's what I think श्रेय वही बोल रहे थे कि यार Havertz was to term to be offside in the game play, इसलिए दिया गया, लेकिन अगेन मेरे लिए डाउट है. आई एग्री विद श्रेय यहाँ पर. यस निखिल डेफिनेटली करेंगे भाई, अभी तो काफी जल्दी, लेकिन 7 बजे करेंगे यार वो ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे. अगेन शाउट आउट है, वी विल डेफिनेटली बी डूइंग अ वॉच अलोंग, प्लीज डू जॉइन अस. राशफोर्ड को सेम था, ऑन साइड दिया. एग्जैक्टली भाई, मतलब मे बी चेल्सी फैंस टॉकिंग यार, मी सीएफसी ब्लूज एंड श्रेय आर वन साइड. आप लोग न्यूट्रल्स, यू टेल मी, एज इन इज इट दिस स्ट्रेंज दैट, मतलब हमेशा होता है, मतलब इट्स नॉट इवन वंस, एवरी टाइम चेल्सी गेट दैट, इट्स गेट्स एन ऑफसाइड. इस मोमेंट में लेकिन people said that finally Chelsea have got the rub of green, लेकिन I don't agree. ये clearly foul था, ये भी, मतलब maybe I'm wearing the Chelsea tinted glasses, I don't know. लेकिन भाई फिर से Reece James, this guy again, मैंने ट्वीट किया था भाई, ये अकेले he was ruling that first 60 minutes. He was ruling it. हाँ, Sterling also you may say, लेकिन what a cross, what a cross. And Sterling was a typical Man City goal, Shrey, for you. I think Reece James did what Kevin De Bruyne used to do for him at City. I think Sterling was at the right position at the right time, and I think it was a very good cross by James. Very good cross. With Sterling, I'm so happy with his performance, happy to see him score, and I think people watching games need to see that how impact Sterling has. I think that pass that Sterling made for Loftus-Cheek, which should have been finished, was such a beautiful pass. I think Loftus-Cheek should have finished that. I have no excuse. 1 yard and you still missed that. So that's bad. But one thing I will say about Sterling before I go to Ankit Bhai is that I think Sterling finishing is still one that sometimes make me hit my head on a wall, because Sterling should have made it score before the James cross as well. It was a very easy chance. But I think that's what to get with Sterling. But Sterling is still a very good player. He's dribbling, he's passing, the way he brings player to the game. I think still you can say on paper, he's the most threatening Chelsea player in the front three. So good to see. And Ankit Bhai on Reece James, I love him to bits, Ankit Bhai. I love him to absolute bits. So good. And he's really proving himself defensively and attackingly. Big up to him, Ankit Bhai. Ankit Bhai, mute पे हो आप. बोला रीस जेम्स की डिमांड और बढ़ते हुए, दैट इज क्वाइट काइंड ऑफ ऑब्वियस, बट एनीवे वो नहीं आने वाला यार, सिंपल, अभी के लिए नहीं आने वाला. दालो विल आइदर स्कोर और असिस्ट इज व्हाट, या अगेन मतलब वो दालो डिड वेरी वेल, विल कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर श्योर, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स. बट अगेन हावी बार्न्स गेटिंग दैट गोल बैक, एज मच एज मैंने प्रेज किया एस्पिलिक्वेटा को, उस गोल में मे बी एस्पिलिक्वेटा वाज फाउंडेड. श्रेय, आई थिंक ओवरऑल हाँ, उसमें मुझे ये लगता है अंकित भाई कि क्या है कि सिर्फ एसपी ने हमारी पूरी डिफेंस फाउंडेड है. अगर देखा होगा अंकित भाई आपने भी स्टार्टिंग से, पहले मेंडी ने गोल किक करी. आई थिंक गोल किक गंदी नहीं थी. हावर्ट्स था जिसने बहुत गंदा टच करा, जिससे एक प्रॉपर स्ट्राइकर है वो बॉल को होल्ड करता. हावर्ट्स ने इमीडिएटली वो बॉल खो दी. जब आप यार इमीडिएटली बॉल खो दोगे, वहां पे 4-on-3 सिचुएशन बन गई. लेस्टर के पास क्विक प्लेयर्स है, आपने ऑलरेडी डेंजर करा. आई थिंक ये प्रॉब्लम है चेल्सी के लिए कि हावर्ट्स एक प्रॉपर 9 है नहीं, तो अगर गोलकीपर लॉन्ग किक करता है तो हावर्ट्स होल्ड नहीं कर पाते. तो आई थिंक लोग एग्री नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है पहले तो उस गोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हावर्ट्स है, जिनको बॉल होल्ड करनी चाहिए थी, एंड ही शुड हैव अदर प्लेयर्स टू कम टू द गेम. आप डिफेंडर से एक पुश से बॉल हार रहे हो तो नॉट गुड. वहीं से हावी बार्न्स के पास बॉल चली गई, एंड देन ही इज सच अ गुड प्लेयर. ही इज सच अ गुड प्लेयर. वो फिनिश जो मारा, वाओ अंकित भाई, गुड फिनिशर. We need that finisher, a proper लेफ्ट हैंड चैनल हमें चाहिए. बाय द वे ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एज मच एज हावर्ट्स इस पर हमने पॉइंट आउट किया है, एवरीवन इन द चैट, आई डोंट नो इफ यू रियलाइज, एंड बाय द वे यस आई नो दैट पीपल आर ड्रॉपिंग ऑफ. पीपल अगेन हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस यार, मतलब वही अगर वीडियो से आना था, इफ आई हैड टू गिव अ रिव्यू फॉर अबाउट 10 minutes talking with just 1 or 2 minutes for every team, I would have done that happily. लेकिन वही I thought it'll be fair to discuss all with you all, because it's a fan channel for all to see. आप लोग का भी मुझे views चाहिए, and when I say views, it's not just about watching for 1 minute, but actually knowing what you think about the game. So I'm going to come to every game, so please hold on everyone, be it Manchester United fans, be it Manchester City fans, be it Arsenal fans, be it Juventus fans, be it even German Bundesliga fans, we are going to cover everything. So वो कैसे होंगे भाई, प्लीज लाइक द स्ट्रीम, डू नॉट फॉरगेट, अगर लाइक्स कम हो रहे तो क्यों हो रहे मुझे बताइए, तो प्लीज लाइक द स्ट्रीम. और यस, मैं तो यार बोलते रहूंगा फॉर अ फ्यू मोर सेकंड्स, बिकॉज आई जनरली बिलीव दैट वी कैन इजीली गेट मोर लाइक्स. एंड नॉट जस्ट दैट, हो सके तो आप प्लीज लाइक माय कम्युनिटी पोस्ट, लाइक माय इंस्टाग्राम पोस्ट, रीट्वीट ऑन माय ट्विटर, आई हैव डन एवरीथिंग. सो ऑल यू हैव टू डू इज आप एक सेकंड जाकर कर दो, क्योंकि यार वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड ऑल योर जनता टू बी अलोंग, because there's a lot to be discussed, and with you all only channel आगे बढ़ेगी, हर एक स्ट्रीम आगे बढ़ेगी. तो let's do that people. It's a plea, but thanks everyone for joining. By Havertz
जो सेकंड गोल था, आई थिंक हैवर्ट्स का ब्रिलियंट प्ले था. वही अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट हैवर्ट्स इस गेम में काफी अच्छा किए कंपेयर टू से प्रीवियस 2 गेम्स. और हैवर्ट्स क्लियरली वन दैट बॉल एंड काइंड ऑफ गिव इट टू रीस जेम्स जिन्होंने क्रॉस किया था. सो आई थिंक आई हैव टू आल्सो कमेंट हैवर्ट्स वहां पे. लेकिन भाई एक जन जो लास्ट हाफ एन आवर में जो किया है बंदा, भाई साहब, everyone man, इसलिए मैं बोलता हूँ it is just a number and I think I am a living example of that. Thiago Silva is my inspiration. He is definitely one of them. Thiago Silva भाई लास्ट हाफ एन आवर में जो स्टैमिना दिखाया है इस बंदे में, नॉट जस्ट स्टैमिना, द पोजीशनिंग, द लीडरशिप अलॉन्ग विद एस्पिलिक्वेटा आल्सो, मैं तो बोलता हूँ भाई दोनों एकदम मजेदार है. और थियागो सिल्वा ने एक्चुअली बाद में ट्वीट भी करते हैं हमेशा, एंड ही एक्चुअली वॉक्स अप टू द फैंस, thanks the fans, applauds the fans. By Thiago Silva, he's a professional not just for Chelsea but for Premier League in general. But we are glad to have this guy, right? And then if not for Thiago Silva, pretty sure we would have drawn that game, right, CheLei? Absolutely, Ankit bhai. And first of all, this photo is so good to see and iconic. And I think Thiago Silva is just superb. I think I love him to bits. I think, as Ankit bhai said, age is just a number. And I think, especially for Silva, he has gone up in age. I think the way he has played, I think sometimes it's important as a player does not need pace, he needs defensive awareness. The awareness that Thiago Silva has is beyond imagination. He's so good. I think I will never forget that block he made against in the match against Liverpool in the final. That showed awareness of a person. Yes, he's not quick, like you can say 23-year-old, 24-year-old, but the way he gets in position is very good. And Ankit bhai, I think you're absolutely spot on. कि अगर लास्ट के 30 मिनट्स में I think Thiago Silva ना होते, मैं इसको सिर्फ 2-2 ना खत्म होते हुए देखता. मेरे को लगता है गेम शायद 2-3, 2-4 भी खत्म हो जाती. बिग अप टू थियागो सिल्वा. आई थिंक अगेन भाई सिर्फ ये मैच नहीं, ही प्लेड वेल वर्सेस टॉटनहम. फर्स्ट गेम एवर्टन के खिलाफ भी अच्छी खेले. तीसरी गेम भी जो हम लीड्स के खिलाफ खेले, आई थिंक वो शायद बेस्ट प्लेयर थे जिस तरह डिफेंस में हम खेले उस दिन. सो बिग अप टू हिम अंकित भाई. एंड ये है कि आई थिंक अभी तो आई एम एंजॉयिंग सिल्वास परफॉर्मेंस, लेकिन मेरे को सिर्फ अगले साल का डर है कौन रिप्लेस करेगा. एंड आई होप कि जो फोफाना एक फ्यूचर रिप्लेसमेंट है सिल्वा की, वो लर्न करे ट्रेनिंग ग्राउंड पर फ्रॉम सिल्वा एंड बिकम्स what we need of Silva, because he's so good for free. What a deal by last ownership. What a deal. Yeah, football gigs, by the way, I don't know if you watched the Leipzig game. Leipzig, they won 2-0 if I remember right last night. Lekin Werner had one of the misses of the century. प्लीज गो एंड वॉच, दैट्स अ रील. और उन्होंने छक्का मार दिया ऊपर और स्टेडियम के बाहर चल गया. तो इसीलिए मतलब वर्नर हैज दैट थिंग, वो ही केम ऑन एज सब्स्टिट्यूट एंड ही हैड वन ऑफ द मिसेस ऑफ द सेंचुरी. जस्ट सी दैट अगर आपने देखा है. बट बाय द वे भाई टूकल वाजंट देयर एंड दैट इज व्हाई दिस परफॉर्मेंस विद 10 men इज इवन बेटर, बिकॉज़ टूकल अप टॉप से उन्होंने देखा डब्ल्यू, तो ही वाज एक्चुअली अप टॉप इन द स्टैंड्स. ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ पंच. चेल्सी ने खुद ट्वीट किया इसके बारे में बहुत ही अच्छे से. लेकिन आई थिंक क्लियरली वो कैरेक्टर जो टुकल देखना चाह रहे हैं एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, इट्स कमिंग आउट. वही चीज हमें अवे भी कंटिन्यू करना है. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. एब्सोल्युटली वी हैव टू डू दैट. बट भाई ये देखिए, फोफाना भी देख रहे थे दूर से वाचिंग लेस्टर सिटी काइंड ऑफ लूज. लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, फोफाना भाई आप आधे चेल्सी प्लेयर ऑलरेडी बन गए हो. होपफुली पूरे बन जाए ओवर द वीकेंड. एब्सोल्युटली अंकित दे रीस सिल्वा शुड साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एएसएपी. हाँ, मतलब रीस जेम्स और मेसन माउंट को तो होने ही वाला है. सिल्वा आई थिंक ही इज ऑलरेडी हैविंग एन एक्सटेंशन, सो आई डोंट थिंक अभी राइट अवे चाहिए. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन ही होगा वापस से, क्योंकि ही इज लिटरली जस्ट साइंड व्हाट इन द मंथ ऑफ May, I remember right? So इतना जल्दी से वापस नहीं देंगे उनको एक और कॉन्ट्रैक्ट. Still can't fathom the fact that PSG gave a contract to in Ramos but not a Thiago Silva. Well, again, by this season he's doing well, but again not a Thiago Silva. I 100% agree. You cannot equate the two. लेकिन anyway, भाई man of the match बोल दीजिए आप लोग के लिए कौन था चेल्सी वाले गेम में, and we'll come to other games as well. I know we have taken half an hour and that's why people have walked off, not having so much patience. But anyway, it is what it is. Yeah, it's a live stream. Live stream discussions are different than short preview. Hopefully, the audience we also understand, and we'll probably be able to do better next time. So let's have more people because we're moving on to other games as well. लेकिन this one, अब देखिए यहाँ पर लिवरपूल की बारे में बात कर लेते हैं. भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल को मारी, और देखिए भाई यहाँ पर बोर्नमथ बेचारी फेस किए लिवरपूल को, दैट इज व्हाई probably लिवरपूल did what they did. लिवरपूल 9, Bournemouth 0. Wow, that has to be discussed quickly, and of course we'll come to Manchester United as well as Man City. लेकिन Shrey, what do you think, man? मतलब जो क्लॉप ने बोला we need a new midfielder, does that basically mean that other midfielders turned up for this game? Was that really an effect? आप देखिए यहाँ पर साउथहैम्पटन भी याद दिलाते हुए बदले. I think first of all, Ankit, that image is so good. I think that was so funny. I think, and it was a true reflection. And I think Liverpool bounced back. Well done to them. And I've been telling people for a long time that do not write off Liverpool. Yes, start has been bad, but if the players are fit and fine, Liverpool is still one of the most dangerous team in the league along with City. Bournemouth, I think
they're not doing the right work this window. You are seeing Nottingham Forest sign Morgan Gibbs-White, Jesse Lingard, trying for Jose Meyer. You are seeing the newly promoted in Fulham getting Palinia, getting Andres Pereira, building up. I think Bournemouth have just come with the championship squad, and sadly, the way they are going on, even right now, 11 points look difficult. They need to improve. They need to get some points. People will criticize Scott Parker, लेकिन यार जो उसका squad है वो championship quality at best. And ऐसे ही चलता रहा तो Bournemouth might not even take more than 15 points and might be worse than Norwich. On Liverpool, big win. I think मैं तभी पिछली वीक कह रहा था थोड़ा आर्सेनल फैंस को अच्छी विन थी, बट बोर्नमouth है वेरी बैड. बट फाइनल पर मैं ये कहूंगा कि बोर्नमouth को अगर कोई टीम बार्सिलोना की तरह दिखाएगी वो सिर्फ चेल्सी है, बिकॉज वी डोंट लाइक प्लेइंग बोर्नमouth. बट उसके अलावा लाइक एम्बैरेसिंग बैड. लिवरपूल का मैंने हमेशा एक बात मैं जरूर कहूंगा लिवरपूल के बारे में, इट्स सो गुड टू सी हार्वी एलियट प्लेइंग. आई लव हार्वी एलियट जिस तरह वो खेल रहा है. आई थिंक हार्वी एलियट इनके मिडफील्ड का कंप्लेक्शन चेंज कर देता है. आई थिंक लिवरपूल की जो मिडफील्ड होती है वो थोड़ी एनर्जेटिक मिडफील्ड है. क्लॉप के अंडर अंकित भाई जब भी सक्सेसफुल थे, फाबिनियो, हेंडरसन, वाइनाल्डम, आई थिंक हार्वी एलियट अटैकिंग इंस्टिंक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट फुट प्रोवाइड कर रहे हैं. अंकित भाई मैं आपसे भी इसमें पूछना चाहूंगा, राइट नाउ शायद वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव यंगस्टर रही है इस लीग में अभी तक मेरे ख्याल से हार्वी एलियट पिछले कुछ मैच से. Yeah, to be very honest, Harvey Elliott disappointed me in the first two games. लेकिन वहां पर क्यों? क्योंकि Harvey Elliott actually in the midfield was playing on the right hand side of midfield. यहाँ पर Henderson came back. तो Elliott playing on the right hand side से क्या होता है? Basically he was a lot of times मतलब अकेले ही प्रोटेक्ट कर रहे थे अलेक्जेंडर आर्नल्ड को. तो इस बार basically they were kind of switching. That helps as well. Of course एक स्पेस दे रहे थे बोर्नमouth फॉर हिम टू टेक दैट शॉट और उन्होंने गोल मारा जिस पर आएंगे. लेकिन पीपल फाइंड द ऑड वन आउट. मैंने क्यों डाला है स्लाइड आप सोचिए, फाइंड द ऑड वन आउट, क्योंकि भाई मो साला मेरे कैप्टन थे एफपीएल के और वापस से हक दिया भाई. मतलब कितने लोग के साला बहुत साला प्लेइंग मानव बोल रहे हैं भाई. वही एब्सोल्युटली मतलब साला या नेगेटिव नहीं बोलूंगा दानिश, लेकिन वही है नॉट मतलब वही साला इज बीइंग कंपेयर्ड टू हिज यूजुअल सेल्फ. सो यू कैन आर्ग्यू दैट एफपीएल पॉइंट साला फ्रॉड. बिल्कुल मैंने इसलिए डाला है, but I'll come to that absolutely. लेकिन as I said, हार्वी एलियट का गोल काफी अच्छा था, no two ways about it. ट्रेंट ने काफी अच्छा किया, लेकिन I think if I'm not wrong, भाई this guy got what about 3 assists and 2 goals if I'm not wrong. भाई फर्मिनो मेरे ख्याल से वही है, टीम लाइक बोर्नमouth गिविंग स्पेस इज आइडियल फॉर फर्मिनो, क्योंकि यार वो ही कैन काइंड ऑफ मूव अराउंड और दैट विल गिव द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर फर्मिनो. लेकिन लुइस डियाज गेटिंग 2 goals एंड दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक भाई. मतलब आई नो ही वाज आल्सो इन माय एफपीएल टीम, लेकिन फॉर लिवरपूल फैन भाई 2 headed goals और वो कितने बार होता है लुइस डियाज गेट्स दैट, तो उन्हें भी डेफिनेटली प्रशंसा मिलनी चाहिए यार, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन व्हिच वाज द गोल आउट ऑफ द 9 goals भाई? सब लोग आप बोल दीजिए व्हिच वाज दैट वन गोल व्हिच स्टूड आउट फॉर मी. ये वाला था भाई. श्रेय आपके लिए? I think this was a goal Ankit as well, just stood out करा. But I think overall, just wow. I think सारे जो लिवरपूल ने गोल मारे वो well built. I think Firmino again has an impact. ये है कि क्या long term लिवरपूल का future है नहीं. But I think for some matches he can do his job as well. Especially I think उनको output पे criticize करा जाता है. But okay, अगर ज़्यादा goals भी मारे, he's assisting, he's still part of the team, and he's making other players look good, जो बहुत अच्छी बात है. And Trent again showing that I think people criticize him, but yes, defensively he makes a lot of mistakes. But attackingly जो वो provide करता है, I think not any right back in the world. Just more closure, you can say. James comes to him, but I think Alexander-Arnold is the most near mid defender I can say to the Dre Bruyne level, and I think even James at the moment, I think probably I attacking wise I would put Trent. The closest attacking wise is actually for me Hakimi in world football. लेकिन हाँ James probably in Premier League I would say. और हाँ defensively is the only issue for me. लेकिन वही है, कमिंग ये दानिश बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं, बिकॉज देखिए मैं यही सोचा था भाई यहाँ पर चेल्सी यार डाउन टू 10 men थी, वी वर काइंड ऑफ नॉट गेटिंग दैट गोल, ऑफसाइड गोल हो गया था उस समय. आई थिंक लिवरपूल ऑलरेडी 6-0 जहां तक मुझे याद है कल, और उस समय मैं सोच रहा था भाई ये क्या यार कब होगी जब वापस से एंचेलोटी के डेज के अंडर वी यूज्ड टू बी 7-0 6-0, वो बहुत कॉमन होता था ना इतना सारा. तो व्हेन विल वी गेट बैक टू दैट? लेकिन इट्स इजी टू थिंक अबाउट इट. Even if Chelsea were 11 men, even if we were playing in Bournemouth, I would not say that we could have been 9-0 at Stamford Bridge. The way Liverpool playing, so you have to sometimes give the just the praise that they deserve. Absolutely they deserve यार. लेकिन वो ये Trent like he's यहाँ पर बोल रहे भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये नेचुरल आता है मेरे पास. लेकिन भाई एक जन ये भी स्कोर के भाई वर्जिल वैन डाइक, he took a lot of criticism after the Manchester United goal last weekend. Yes, I know attacking wise हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी him getting a goal will increase confidence. So any Liverpool fans in the house or neutrals आप बोलिए भाई, is Virgil van Dijk the same player what he once was, or he actually kind of not so good because of recent times? I still feel that there is a player और वो hesitant थे क्योंकि there's not a natural defender next to him, center back that is. लेकिन goal of the match कोई किसी ने ये नहीं बोला. I would say this was also maybe in the context because
Fabio Carvalho, young guy coming on. Brilliant volley, I think. Awesome volley tha inka. Matlab, I would also rate this alongside Trent in that goals of the match. But let's move on to a City game. Yes, by the way, City के लिए वापस से shout out भाई to Manav, especially because उन्होंने थोड़ी analysis की है, and I'll share that as well, Manav. Absolutely. भाई लेकिन पहले जो John Stones का goal हुआ, and it was an own goal, and then obviously this Anderson goal. तो 2-0 down. मतलब Shrey, what do you think City are doing wrong defensively? मतलब there is certainly set pieces में something wrong, right? आई थिंक अंकित भाई डिफेंसिवली दे हैव बीन ऑल ओवर द प्लेस अभी प्रीमियर लीग सीजन में। आई थिंक वेस्ट हैम के साथ अच्छा खेले डिफेंसिवली फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन। बोर्नमूथ तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, तो हाउ बैड बोर्नमूथ है राइट नाउ। उसके बाद आई थिंक वाओ, आई थिंक जिस तरह 3 गोल न्यूकासल के खिलाफ गए, एंड आज भी इन्होंने 2 गोल खाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी अब स्कोरिंग पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जो एक पॉजिटिव भी आई थिंक सिटी फैंस के लिए कि अब स्कोर ज्यादा कर रही है। आई थिंक मुझे अभी भी अंकित में सिटी का एक डाउट है जो मैं मानव भाई से भी पूछना चाहूंगा कि सिटी के पास अभी भी नेचुरल विंगर्स नहीं है। ही इज स्टर्लिंग जा चुके हैं एंड फोर्डन है, पर उसके अलावा आपके महाराज है जो एक प्रॉपर पेसी विंगर नहीं है। तो क्या सिटी को सीजन, ग्रिलिश भी मोल कैम है, तो क्या सीजन में आगे जाके सिटी को हर्ट कर सकता है कि इनके पास एक नेचुरल विंगर नहीं है जो पेस से भागता है एंड कहीं ना कहीं वो विथ क्रिएट करता है टीम के लिए। बट उसके अलावा अंकित भाई लाइक कमिंग बैक लास्ट मैच फ्रॉम 3-1 डाउन टू 3-3 विद इन 10 मिनट्स एंड नाउ आई थिंक दे टू चैंपियंस। एंड अगर मैं खुश था, मेरे को लगा चेल्सी क्लोज गैप कर देगी, बट अगर इसी तरीके से चलता रहा आई थिंक मुझे नहीं पता कि हम कैसे सिटी का गैप क्लोज करेंगे, क्योंकि मेंटालिटी अंकित भाई इनकी इज बियॉन्ड माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा करेगी। आई थिंक मेरे को लगा पहले से ज्यादा ड्रॉ हो जाएगा, 2-2 हो जाएगा, बट अंकित भाई 4-2, बिग अप टू देम अंकित भाई, बिग अप। Yeah, by the way, this is what you're talking about. Manav has helped me with this tactic. So basically, as Manav is depicted here clearly, and yes, let's just go through it a little bit. So, देखिए, technically in the first 60 minutes, what City were doing, I'm looking at it as a 4-3-3. You can say it's a 2-3-2-3. जो City, try to basically bomb on the full backs. वही होता है. But on the other hand, Crystal Palace were defending in a 5-4-1, which was almost like a 5-2-3. तो आप देखिए यहाँ पर literally man to man हो रहा था. और एक एक्स्ट्रा मैन भी था इनफैक्ट डिफेंडिंग देम, तो लिटरली दे डिडंट गिव एनी स्पेस बी टू सिल्वा बी टू केडीबी जब वो डाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ पासेस इन द फर्स्ट हाफ स्पेशली, राइट? तो बिल्कुल भी नहीं दिया। इनफैक्ट उनके फुल बैक्स भी काइंड ऑफ टक बैक थे बिकॉज ऑफ दैट रीजन, दे डिडंट हैव इनफ स्पेस। लेकिन वो ये डिफरेंस बीइंग जो विड्थ आप बोल रहे हो ना, आप देखिए सेकंड हाफ में जो उन्होंने किया है, स्पेशली आफ्टर अल्वारेज जो आया था एट द आवर मार्क, आई थिंक ही रिप्लेस कैंसेलो, तो उस समय अब देखिए सिल्वा एंड फोर्डन हैव गॉन वाइड. So that is what has happened, and they had gone almost to a 3-4-3. You can say that. So that was, in my view, brilliant from Pep Guardiola. Who would have imagined Gundogan taking that space? और वहां से क्या हो रहा था, गेही और वार्ड थोड़ा सा सिंगल डॉट हो रहे थे, rather than basically City players doing that, क्योंकि City के पास एक एक्स्ट्रा मैन था इन अटैक, और उससे क्या हो रहा था, मिडफील्ड में स्पेस मिल रहा था फॉर केडीबी टू काइंड ऑफ पुट दोस बॉल्स, और वही हुआ। ऑब्वियसली द मैन, द ग्रेट, आई थिंक फर्स्ट, सबसे पहले उससे पहले आई थिंक एक देना पड़ेगा हमें एक बहुत ही काइंड ऑफ अ प्रेज टू बर्नार्डो सिल्वा। आई थिंक फॉर मी बर्नार्डो सिल्वा चेंज द गेम। जो कमबैक किया था ना, वो बर्नार्डो सिल्वा की वजह से ही हुआ था, क्योंकि एज मच एज बेसिकली ऑब्वियसली विल कम टू द मेन मैन जो है टॉक ऑफ द टाउन फॉर दिस गेम, लेकिन आई थिंक इट्स डेफिनेटली बर्नार्डो सिल्वा उन्होंने चेंज किया था। एंड ऑफ कोर्स अल्वारेज, जैसे मानव ने दिखाया उसमें और मैंने जस्ट आपको बोला है, अल्वारेज इज अ नेचुरल विंगर, बिल्कुल। आई वाज City set piece defending is looking a lot more fishy. Stones and Diaz need to go for zonal marking rather than man marking. That leaves people like Haaland on a 2-1 to defend. Fair point. City in a different league, man. They are comeback monsters. The only problem I see is that they need a good right back and the centre back. Stones and Aki aren't up to the mark. Otherwise, this team is damn good. By Divyanshu, मैं बोलना चाहूँगा, Nathan Aki arguably has been the best centre half this season. I know खाली तीन मैचेस हुए बिकॉज थर्ड मैच ही बिकेम इंजर्ड, लेकिन आई थिंक दोस 3 मैचेस अगेन सिटी फैंस आप लोग बोलिए, फॉर मी नेथन आकी लुक द बेस्ट. हाँ, आई नो yesterday भाई, डिस्पाइट दैट ओन गोल, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं श्रेय, दोस्त Pep Guardiola was so excited. I don't know what. After the match, he's like, he hit Stones. I'm like, okay, you are the man, man. You are the man. You are the man. सब लोग हंस रहे थे भाई, ये बहुत ही मतलब एक सीन वाला कल, कोई नहीं. हालैंड होल्ड प्ले ट्रेमेंडस, बिल्कुल भाई, हालैंड पर तो आ ही जाए. लेकिन उससे पहले एक पॉइंट हुआ था, ये आप लोग बोलिए, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है. दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई कुड गेट. Basically, there was a point when Ederson, released the ball, और वहां पर I think if I'm not wrong, Hudson Odward, he kind of took the ball and gave it to Ayu, who hit it on goal. So it could have been 3-1 at a time, ठीक है, लेकिन it was ruled out because I think if I'm not wrong, you're supposed to touch the ball only once it crosses that D.
तो उन्होंने ऑन द लाइन टेक्निकली टच किया। तो व्हाट डू यू ऑल थिंक? I know that Premier League did not speak about it enough. लेकिन this was a talking point for neutrals. So for me it was still fair enough because it was थोड़ा डाउट था, तो benefit goes to the defending team. लेकिन श्रेय, what do you think? Again वही है, ऑफसाइड वाला चीज हम बात कर रहे थे थोड़ा, 1920 वाला केस होता है with Chelsea, it goes the other way around. Is it a thing, or am I being too salty यहाँ पर? आई थिंक अंकित भाई दोनों है, पर मुझे ये नहीं लगता कि चेल्सी के खिलाफ जाता है। आई थिंक सैडली इनकम्पिटेंस है। आई थिंक साथ ही साथ कहीं ना कहीं रूल्स में आई थिंक दे कीप शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने कहा था, आई थिंक जितना मेरे को याद है अंकित में एक बीच में स्टेटमेंट आई थी कि अटैकर्स को अब मोर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा। तो वाई सडनली अब डिफेंडर्स को डाउट दिया जा रहा है बेनिफिट? तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। आई थिंक बीच में आर्सेन वेंगर जो वो फीफा के हेड थे, उन्होंने भी एक बात निकाली थी कि वो ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे अटैकर्स को बल्कि 2 से 3 मीटर तक आगे जाने का अलाउंस होगा, पर वो भी गलत रूल है। आई थिंक कहीं ना कहीं दे हैव टू रीच अ मोर आई कैन से प्रॉपर सोल्यूशन, जहां पे आपको ऑन नेकेड आई सही लग रहा है, यू गिव इट। जहां पे प्रॉपरली डायग्राम से दिख रहा है कि आपको नहीं है, आई थिंक यू डोंट गिव इट। दिस इज कंफ्यूजन अंकित भाई, बिकॉज अब मेरे को नहीं पता शायद डिसीजन सही हो, बट पैलेस कुड हैव बीन 3-1 अप और वहां से गेम बदल जाते हैं। आई थिंक वी हैव टू बी ऑनेस्ट, 3-1 के बाद कहने की सिटी का कमबैक मॉन्स्टर था, शायद 3-3 ड्रॉ हो जाए, शायद 4-2 ना जीते। तो आई थिंक फर्क पड़ता है उन चीजों में। आई थिंक स्पेशली अगर आप देखोगे 2 मिनट का इस सीजन पे मान लेते हैं कि सिटी 1 पॉइंट से जीतेगी लिवरपूल के खिलाफ, तो लिवरपूल याद करेगी ये ड्रॉ, अगर ये ड्रॉ होता तो कहने के लिवरपूल लीग जीत जाती। तो अंकित भाई आई थिंक दे नीड टू कम ऑन अ कंसिस्टेंट रूल, कि वही कंसिस्टेंट रूल फॉलो होगा एंड उसी तरीके से होगा। बट ओवरऑल अंकित भाई लाइक व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय लीडा सिटी। बोल रहे हैं यहाँ पे, सिटी practicing in Premier League to learn how to come back in UCL. Wow, after learning from Real Madrid, like Chelsea have also learned, you can say, argue that, क्योंकि हम भी come back किए थे, not in terms of goals, in terms of 10 men. With 10 men we played better, you can argue that. लेकिन again मतलब the talk of the town has to be this guy यार, मतलब this guy, मतलब होता ना taking match by the scruff of the neck, और वो literally लग रहा था। Yes, Bernardo Silva और Alvarez were the catalysts towards it, लेकिन भाई implement इसको करना पड़ेगा because he is the center of all. And he has already kind of scored so many goals. He is, I think, going to be not only City's top scorer ever if he stays. That is, I think Premier League kabhi, there's a high chance that he might actually overtake Kane, even though Kane might not retire. That's how threatening he can be. Lekin again, short-lived career bhi hote, so let's hope that he has a long career यहाँ पे for City fans perspective. लेकिन हाँ, Real Madrid center for semi-final team has changed. Okay, since we have come back 4 times in 6. या वो ये मानव ने बताया भी था पहले भी. Nice one मानव. Yes, रौनक भी बोल रहे हैं बिल्कुल. In all 4 games we were trailing by 2 goals. Wow, that's a good one. लेकिन by Haaland at this point in time best striker in the world, or you still say Benzema? आई थिंक बेंजेमा अभी भी, बट ये है कि बेंजेमा की एज और हालैंड की एज, आई थिंक हालैंड कहीं ना कहीं और लेवल ना चले जाए। बट अभी अंकित में हालैंड का मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आई वांट टू सी हिम हाउ ही डज इन बिग गेम, स्पेशली जैसे उस दिन बेंजेमा ने करे जब रियल प्रेशर में होती थी, वो गोल्स मारे। आई थिंक अंटिल दैट मैं बेंजेमा के लेवल तो नहीं पुट करूंगा, बट अंकित भाई वाओ, लाइक आई थिंक अंकित भाई मेरे को बहुत तरस आता है हम पे। आई एम वेरी सैड। आई थिंक लास्ट ईयर वी कुड हैव पेड 30 मिलियन एक्स्ट्रा हालैंड को ले आते। अब लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी लुकाकू की मोस्टली टैली मैच कर दिया है, जिस तरह लास्ट सीजन के गोल थे, वो भी सिर्फ 3 प्रीमियर लीग गेम वीक्स में। व्हाई वी डिड नॉट पे द एक्स्ट्रा 30 मिलियन इज बियॉन्ड मी। एंड अंकित भाई वेरी जेलस मानव भाई भी है, वेरी जेलस मानव भाई आपकी टीम से। बिल्कुल बट टॉकिंग अबाउट स्ट्राइकर भाई, एक स्ट्राइकर जो बढ़िया किए थे, एंड यस बाय द वे आई नो दानिश भी है, काफी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी वेट कर रहे भाई, विल बी डिस्कसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर श्योर बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन टू बी हैपनिंग देयर। बट फॉर मी लाइक द स्टार्ट्स, हाँ पूरा गेम नहीं बोलूंगा, लेकिन जो पहले 15 मिनट थे इस गेम के भाई, सुपर्ब मैन। यूवेंटस मतलब लास्ट, आई थिंक गुरुजी था स्ट्रीम में, एंड वी हैड डिस्कस्ड दैट इट वाज सच लेम टैक्टिक्स बाय यूवेंटस अप टिल नाउ, लेकिन बिकॉज इट वाज रोमा, मे बी आप बोल सकते हो, यू कैन आर्ग्यू दैट मतलब दे द टेल्स वर रियली अप यार, मतलब फॉर दिस गेम। और व्लाहोविच ने क्या लिया फ्री किक भाई, सबको मालूम था कि व्लाहोविच इतना अच्छा फ्री किक ले सकते हैं, मुझे तो नहीं मालूम था। आई हैड सीन हिम but he was not a hardcore free kick taker of the left foot. मतलब what a free kick taker man. Of course man, Vlahovic मतलब क्या लगता है, मतलब maybe for a Juventus I really feel, I don't know about you in the chat everyone, लेकिन मुझे लगता है that Vlahovic this season will flourish much more because you have a natural width, जो natural width missing थी last season। सबको याद है that there were times because Chiesa was injured, I think Rabiot काफी दफा left side play किया करते थे, sometimes even Cuadrado played on the left hand side even this pre-season। लेकिन I think now that the season has begun, अभी Kostic है left side में, Di Maria है, you have a Cuadrado, you have a Chiesa, you have 4 options। Chiesa अभी आए नहीं, चलो आ जाएंगे 3 महीने में, लेकिन भाई
you still have three options, or that will give your width to a Vlahovic. Because of width, एक तो है भाई, he's a good free kick taker, पता लग गया अभी, especially like a zero technique है उनका, तो भाई you can certainly expect a lot of goals from the free kicks, और वो because of those white players, Juventus can win a lot of free kicks. But again, typical Jose Mourinho performance, because Tammy Abraham came back. What do you think, people? By Tammy Abraham, I know set piece goal tha, but it was a typical Jose Mourinho thing. By आप first half में basically suck करो pressure, suck up the pressure as much as possible, and then basically you have that set piece, or Tammy Abraham came. लेकिन Tammy Abraham खुद तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि पता नहीं क्या कर दिया है, बाद में जोसे मोरिन्यो उनको, यार that's why I love Jose Mourinho. Everyone in the chat, let me know. Look at this, yeah. Look at this. Mourinho has said Dybala made the difference. I saw Abraham giving an interview. He made it sound like he played a great game, but he was horrible. Bindas, yeah. Mourinho is the best, right, Shrey? For that reason, he elevates the players' level for this. But like pressure डाल करना. I think Jose के बिना I think मैं समझ नहीं आता कि फुटबॉल कैसे देखेगा. Like Jose is the best person जो फुटबॉल को इंटरेस्टिंग बनाता है. I think that comment is good one. I think अब ये है, आई थिंक जोसे का हमेशा के बारे नहीं भी काम करता था, क्योंकि ये चीजें वो कभी यूनाइटेड में ट्राई करते थे. प्लेयर्स यूज्ड टू टेक इट ऑन हार्ट एंड कहने की दैट अंडरस्टैंडिंग ब्रोक होती थी. आई थिंक रोमा में मैंने एक चीज देखी है, माइट बी बिकॉज रोमा एक स्लीपिंग जाइंट है जो इतना नहीं परफॉर्म करी. कहीं ना कहीं शायद ये भी कह सकते हो कि कई बार क्या होता है कि एक मैनेजर क्लब से बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट आ जाती है जो होती नहीं. जैसे यूनाइटेड में था, आई थिंक मॉरिनो ये सेम चीजें करता था पोग्बा के साथ, बट एक अंडरस्टैंडिंग नहीं दोनों में. आई थिंक रोमा में जितना मैंने देखा है, मॉरिनो इज लव्ड बाय द प्लेयर्स, मॉरिनो इज लव्ड बाय द फैंस, मॉरिनो इज लव्ड बाय द मैनेजमेंट. और जब आप मॉरिनो को पूरा प्यार दोगे ना, आई थिंक वो एक ऐसी मेंटालिटी क्रिएट कर देता है कि वर्ल्ड अगेंस्ट अस. एंड आई थिंक वो टैमी अब्राहम से वही ट्राई करा. आई थिंक टैमी इज अ यंग टैमी, एक मैं ये कहूंगा टैमी इज अ वेरी प्रोफेशनल गाय. टैमी ने चेल्सी में भी जब उनको नहीं खिलाया जा रहा था, आई थिंक उनके फैमिली मेंबर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी पोस्ट डाल के, बट टैमी ने नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, मुझे याद है. एंड टैमी केम ऑन, डिड द जॉब व्हेन रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक टैमी मॉरिनो से लर्न कर रही है. एंड आई थिंक ही विल टेक दिस ऑन गुड वे, क्योंकि अच्छा है मॉरिनो ने कहा, बिकॉज द वे ही वाज सेलिब्रेटिंग मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर जा रहा था. कई बार कंप्लेसेंसी आ जाती है, तो गुड टू सी दैट. एंड रोमा अच्छी लग रही है, एंड यूरोपा लीग में अच्छा होगा अगर किसी स्टेज में रोमा वर्सेस यूनाइटेड देखेंगे. दैट विल बी एपिक. Bilkul. Let's see how they do in Europe this time, because again they have, by the way, Nemanja Matic started yesterday. That was like वो ये maybe Wijnaldum injured हो गए, तो इसलिए मैं आप बोल सकते हो every striker shines before Chelsea transfer. Chelsea and also okay, fine. Let's see, man. Well, I hope Aubameyang comes and doesn't do so badly. Tammy would have been much better than Lukaku last season. Well, I agree, Nutcrackers, but would he have fit the the concept of what Thomas Tuchel brings? I don't think so. City की mentality अब Madrid जैसी हो गई. गोल खाते ही फिर मारते हैं, फेयर इनफ. यूवे एंड स्पर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बट मुझे वो दोनों इतने कन्विंसिंग नहीं. वेल, यूवेंटस का वही, दे स्टार्टेड वेरी वेल. द पॉजिटिव फॉर यूवेंटस फैन वुड बी दैट दे स्टार्टेड वेल, दैट्स व्हाट आई वुड से. लेकिन हाँ, it's a typical Mourinho thing, simply a typical Mourinho thing. Yes, वो ये he uses the substitutions to change the game either negatively or positively. वो difference है. जैसे आप देखे थॉमस ट्यूकल कल क्या कहते थे, after a certain moment there was a like for like change etc. लेकिन वो ये Mourinho believes in actually not that. Sarri also, for example, in the Italian league, and yes, talking about Sarri, भाई over the weekend Lazio have beaten Inter. भाई Lukaku हग्गा है उस performance, हग्गा, proper हगा था. Lukaku got replaced by Dzeko, just to let you know. लेकिन having said that, Pedro did very well. लेकिन Sarri is also one of them जो like for like replacement replace करते. इसलिए मैं बोलता हूँ Mourinho is underrated in terms of that, the changes that he makes. Sometimes yes, थोड़ा negative हो जाता है, like John Obi Mikel in the past, लेकिन it is needed for the team. इसलिए मैं बोलता हूँ. And talk about United as well. By even in United, he was doing a lot of negative changes. I think Fellaini used to come on, लेकिन definitely it is. But I don't think Aubameyang will go there. Yeah, Lira, you're right, absolutely. लेकिन let's talk a little bit about United. Yes, Southampton United थी, for people out there who don't know, it was an early kickoff. It was 1-0 to Manchester United. लेकिन भाई एक मोमेंट था गेम में, क्या हुआ वो यार, मतलब इतना पिंग पोंग खेल के भी they didn't score, and that was the moment I thought वो definitely concede होने वाला है. So I think this was a game जहां पर both teams kind of rode their luck in the first say 50-60 minutes. लेकिन overall you can argue that maybe United kind of deserved that goal. And yes, Bruno Fernandes का गोल था, लेकिन Diogo Dalot probably stood out in this game. Like but the biggest talking point has to be the fact that Serie, or again people in the chat, Ronaldo not starting. Like, is it for real that Ronaldo's time is up as a player, or is it only for Manchester United, or it's just the fact that बाकी forwards better कर रहे हैं last 2 matches से? I think it's more to do with जो I think backstage पे चल रहा है. I think Ronaldo would have started, but
जब आप प्लेयर एक ट्राई कर रहा है दूसरे क्लब्स में जाने में, कभी स्पोर्टिंग, कभी नापोली, कभी चेल्सी, कभी बायर्न, आई थिंक इट्स बेटर टू नॉट प्ले हिम क्योंकि दैट्स रॉन्ग। मैं सिर्फ ये कहूंगा, आई होप रोनाल्डो अंडरस्टैंड्स कि कोई बड़ा क्लब अभी नहीं होने चाहता। स्टे एट यूनाइटेड, यूरोपा लीग जितवाओ, बी अ हीरो एंड बी रिमेंबर। बैलन डॉर में वैसे भी चैंपियंस लीग खेलोगे, यू वोंट कम। बेंजेमा, हालैंड आर अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ, बट आई थिंक राइट नाउ उनके आई कैन से यूनाइटेड आर फंक्शनिंग मच बेटर क्योंकि लाइनअप में प्रेस ज्यादा है। आई थिंक बिना रोनाल्डो के आई थिंक टीम मोर एज ए प्रॉपर टीम खेल रही है, ना कि एक ही प्लेयर के खेल रही है। एंड आई थिंक ओवरऑल मार्शल का मैं कहूंगा, मैं दानिश भाई यूनाइटेड फैन से पूछना चाहूंगा कि मार्शल की इंजरी का क्या हो रहा है, लाइक इज इट कंसर्निंग फॉर यूनाइटेड फैंस क्योंकि ही इज अ प्रॉपर नेचुरल स्ट्राइकर बट वो हमेशा ही इंजर रह रहा है। एंड डू यू सी रैशफोर्ड प्लेइंग दैट रोल नाउ ऑफ अ स्ट्राइकर फॉर द होल सीजन एंड कैन दैट वर्क फॉर यू? Yeah, I think, you know what, it's more about for me the fact that, simply put, Elanga इतना young है, he doesn't want to, as in dent that confidence जो एक मिला है finally. तो Elanga, even in yesterday's for goal, I think Elanga का भी I think contribution था. Elanga kind of started the move, if I remember right, correct me if I'm wrong people. पहले के Elanga ने शुरू किया और Rashford ने space create किया. How Rashford occupied the defenders of Southampton, और वहां पर यू गॉट अ स्पेस फॉर बेसिकली और फर्नांडिस एंड to some extent McTominay by the way. Yes, there was a talking point again, भाई, and I don't have the picture ready with me right now, लेकिन भाई मैकटोमिने का एक हैंडबॉल एपिसोड था, और अगेन वेरी कन्वीनियंटली, आई डोंट नो, मे बी आई एम बीइंग सॉल्टी बीइंग ऑपोजिशन फैन, भाई नो डिसरिस्पेक्ट मैनचेस्टर फैंस, लेकिन भाई प्रीमियर लीग का कवरेज में लिटरली उन्होंने वेल लेफ्ट कर दिया भाई, ऐसे आता है ना बॉल, वेल लेफ्ट कर दिया बस प्रॉपर। मैकटोमिने का हैंडबॉल प्रोबेबली आर्ग्यूबल था, लेकिन आप बात ही नहीं की उसके बारे में, बात ही नहीं की है। चेल्सी का ऑफसाइड गोल जो दिया गया, आप बात ही नहीं की है, मतलब, and they pick out certain things, so it kind of gives me a lot of question, but maybe it was a matter of time. I don't know, aap log boli in the chat, if it wasn't that MFC, okay, Manchester was the better team, I would, this game could have gone okay, just that Manchester United players have a bit more quality. Well, I think they played well. In fact, Dalo had a very very good game, Manav, in my opinion. Probably I would say Dalo was the man of the match for me. He had such a good game kal raat ko. Like, anyway, Ten Hag wants to build a fresh young team and he wants to get both out of Rashford and Sancho. And he also said on record that, by the way, about Maguire and Ebola, like, yes, a captain can be there without playing, because especially the fact that if you have Varane. So similarly, if you have that pace on the wings like Rashford and Sancho can bring you, especially जब Martial आ जाते हैं, तो तीनों ही पेसी है. So that is why you can argue. So fair enough. Fact, Haaland has more hat-trick than Rooney at 2 and 4. Yeah, that's okay, but come on. Pretty sure Lila आप ये नहीं बोल रहे हो भाई, he's better than Rooney at 2 and famous strikers already. मतलब he has to do it. Potentially he will be better. लेकिन in my opinion, Rooney is another striker who's not respected enough by today's fans. That's the reality. But I think Rooney is among the top 3 strikers of the Premier League period. But Haaland will be probably better. अभी के लिए नहीं. By Mr. Phenomenal, we did an entire session on Almighty Sports Plus. Please check करिए, because the football conversation I don't want to get to it. लेकिन I would also say that we are doing a watch along, और watch along के पहले हम वापस से करेंगे. So do join us on Almighty Sports Plus around 6:45 बजे. Big up आपको, और सब लोग ने like कर दिया hopefully stream को. Yes, Ankit, we are being favored by English FA. Lumanius, I think that there's a pun intended there. कोई नहीं. Chelsea have blocked decision to let Trevor Chalobah leave this summer despite interest from Inter CFC Blues बोल रहे. AC Milan and Leipzig से भी interest है. Told the decision was made earlier on last week. Let's see. मतलब ये पॉइंट हमने डिस्कस तो नहीं किया डिटेल में, लेकिन श्रेय एंड एवरीवन इन द चैट, आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस, हैज चालोबा डन इनफ टू सजेस्ट दैट, एंड आई एम गोइंग टू आस्क अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इन अ बैक थ्री वुड यू स्टार्ट हिम और एस्पिलिक्वेटा? आई नो दोनों ही स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन गिवन अ चॉइस कौन शुरू करेगा आज के दिन में? आई थिंक दैट विल बी चलोबा, आई थिंक, एंड आई थिंक जिस तरह चलोबा लास्ट सीजन भी खेले, आई थिंक चलोबा मस्त है चेल्सी। अंकल भाई, हमारी प्रॉब्लम ये है कि सिल्वा कैन नॉट प्ले एवरी गेम। हम चाहे जितना अच्छा खेल रहे हैं, आई थिंक सिल्वा अब मिडवीक गेम है प्रीमियर लीग की, फिर संडे को गेम है, आई थिंक बहुत रिस्की है उनको दोनों मैच खेलना। आपने देखा भी अंकित भाई, मैच में एंड में क्रैम्प्स हो रहे थे उनको थोड़े, उसके साथ कुली बाले भी 32-33 की एज में, हम ये नहीं स्किप कर सकते। एस्पी भी 31-32 की एज के है, फिर आप फुफाना ले आए, पर ये सिर्फ 4 सेंटर बैक्स हुए, 3 सेंटर बैक की पोजीशन पे। हमने चैंपियंस लीग भी खेलनी है, कप्स भी खेलनी है, एफए कप भी खेलना है। अंकित भाई, आई थिंक चैट को भी पता होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग गेम्स बहुत जल्दी-जल्दी खत्म करी जाएगी। मिड वीक में जैसे पहले होता था ना, मिड एक गेम होता था, फिर 2 हफ्ते बाद होता था, अब ऐसे नहीं होगा। अब आई थिंक अभी भी मैच है, फिर एक और मैच है, फिर इंटरनेशनल ब्रेक, फिर से मैचेस आ जाएंगे। तो उसके लिए अंकित भाई, आई थिंक इट्स वेरी गुड डिसीजन। मैं ये चाहता था अंकित भाई कि दोनों के दोनों रहे, चलोबा एंड एम्पाडू। आई थिंक रॉन्ग डिसीजन है एक को जाने देना, बट व्हाटएवर, यू कैन बी फाइन विद वन, एंड आई एम हैप्पी चलोबा स्टे कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट ईयर पे प्रूव करा है।
आई थिंक वो ऐसे यूथ प्लेयर अंकित भाई जिनका ज्यादा नाम नहीं है, आई थिंक जिनको फैंस ज्यादा हाइप नहीं करते, वो सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छी स्टोरी लगती है एंड आई वांट हिम टू स्टे, जो उन्होंने ड्रीम बनाई है यहाँ पे। fair enough. So देखिए, गुड एज अ बैकअप, ओके, लिवरपूल हैव टू साइन अ मिडफील्डर अभी भी आफ्टर 9-0 भाई, कितना मतलब यूनिट 20-0, बट हाँ, फेयर इनफ, मिडफील्डर की बात हो रही है और अगेंस्ट बोर्नमथ था, तो आई अंडरस्टैंड दैट. आई थिंक नेवेस इज प्रोबब्ली गोना गो देयर, लुक्स लाइक इट. Chalobah looks good, whereas Aspi is more experienced, difficult call. But I am still, everyone knows it, I am still for Aspi. I genuinely believe that Aspilicueta, I think yesterday's performance also showed, yes, defensively he's not that great, लेकिन एक organization, एक voice चाहिए. Chelsea especially have that thing कि हम focus बहुत जल्दी से lose कर लेते. We don't have that character जो होती थी Chelsea के teams में between 2005 and 2020. तो हमें चाहिए वापस से वो character, और वो लाते हैं Aspilicueta. तो मुझे चाहिए Aspilicueta on the pitch, अगर if we get a chance, that is, that's just my call, and that's the reason why Chalobah must be wanting to move. क्योंकि यार आप देखिए यहाँ पर when you talk about center backs, after Fofana coming, it'll be Koulibaly, Silva, Fofana, Aspilicueta, and then Chalobah. So he's the fifth choice center back. आप सोच सकते हैं, and maybe even Kukurea before that. तो आप you just think about it. लेकिन I really want Chalobah to stay. Okay, by the way, Arsenal की थोड़ी सी बात हो जाए. Definitely भाई, Arsenal तो did have a very good game. No, not really, लेकिन I think मतलब some gritty performance चाहिए ना श्रेय, in a season where you basically are not doing well in some matches. Did Arsenal show that enough of, or would you say Fulham, they were in the lead, Fulham को जीतना चाहिए था वो मैच? I think Ankit bhai on Arsenal, I think मैं देख रहा हूँ थोड़े पंडित्स I think are getting too much on Arsenal की ज्यादा ओवर सेलिब्रेट कर रहे हैं. I think ऐसा नहीं होना चाहिए. I think ये कोई डिग नहीं है आर्सेनल पे, कोई बैंटर नहीं है, बट आर्सेनल के फैंस ने ये दिन बहुत रेयर देखे हैं पिछले कुछ 15-20 सालों में, जब उन्होंने सीजन 4 विक्ट्री से शुरू करा है. मेरे को भाई याद भी नहीं आता, मैं 13 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ कि कब आर्सेनल ने सीजन ऐसे स्टार्ट करा है. तो आई थिंक दे हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट, स्पेशली आर्सेनल ऐसी टीम थी तो जब 1-0 डाउन जाती थी कमबैक नहीं करती थी. तो बिग अप टू देम. आई थिंक आर्सेनल अच्छी फुटबॉल खेल रही है, बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आर्सेनल हैज मच, से सारा बहुत अच्छा लग रहा है अंकित भाई. मैं चैट की भी ओपिनियन चाहूंगा, आपकी भी ओपिनियन चाहूंगा. अभी अच्छा लग रहा है, बट मैं ये कहूंगा कि अगर चेल्सी, टॉटनम, यूनाइटेड आर्सेनल से ज्यादा गैप ना रखे और यूरोपा लीग एक बार शुरू हो जाए, तो आपको इतनी दूर जाना है थर्सडे को खेलने, जिसका मतलब आप बीच में ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे. फिर आप फ्राइडे को इंग्लैंड वापस आओगे, आप एक दिन का रेस्ट लोगे, फिर आप सैटरडे को ट्रेनिंग करोगे और संडे को मैच होगा. व्हेन दिस विल कम? और अभी भी गेबल हीजस का बैकअप एंकिटी है, स्मिथ रो अच्छे विंगर बैकअप है, पर उसके अलावा और कोई नहीं है. आई थिंक जो इनकी मिडफील्ड है उसमें भी ऑप्शंस एल नेनी है जो इनके पास बेस्ट अवेलेबल है. आई थिंक जब यूरोपा लीग आएगी ना अंकित भाई, दैट इज द रियल टेस्ट कि व्हाट आर दिस टीम मेड ऑफ, इन माय हम्बल ओपिनियन. या मतलब देखो, टेक्निकली मतलब अगेन आर्सेनल फैंस, मैं जनरली करता नहीं हूँ. मैं बोला था लास्ट वीक दैट इट विल बी प्रोबेबली द वीक जब ये लास्ट होगा, ये फिर से होगा नहीं, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आर्सेनल फैंस आपके लिए. लेकिन भाई आपका बेसिकली अच्छा फॉर्म चल रहा है, और ऑफ कोर्स क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. आई अंडरस्टैंड दैट बीइंग आर्सेनल इज वन थिंग दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट, जो श्रेय भी बोल रहे थे, जो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ी वो द कोर्स ऑफ सीजन, स्पेशली आफ्टर यूरोपियन फुटबॉल शुरू होने के बाद. दैट्स द बिगेस्ट डील. क्योंकि वही अटेटा का लास्ट सीजन जब वो था, तो देन ही डिडंट डू वेल, एंड व्हेन नहीं था तब ही कुड हैव डन वेल. तो बट द रियलिटी इज, बस आप देख लीजिए यहाँ पर, यस, आर्सेनल आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल एंड इट्स अ परफेक्ट रिकॉर्ड. तो यू हैव टू गिव इट टू आर्सेनल ऑल द क्रेडिट. लेकिन कमिंग टू एक क्वेश्चन आया था अबाउट ओडेगार्ड. आई थिंक ओडेगार्ड, arguably, yes, Gabriel Jesus has done awesome. No two ways about it. Gabriel in centre back has been awesome as well. Saliba, उन दोनों का पार्टनरशिप अच्छा रहा है. लेकिन Odegaard for me has made a difference, और not just by the goal जो score कर रहे हैं from last couple of matches, but I would say his captaincy, which I really did not expect. Because आप देखिए, talk about voice in Chelsea being Aspilicueta, ना, he is someone जो basically उनका जो positioning आप देखो, he kind of puts his hands across, आप वहां जाओ, आप यहाँ जाओ. He's like a Jorginho in attacking midfielder of Arsenal, which is something which is awesome for them, and which was probably what was missing. Granit Xhaka has also improved, maybe because of that. एक होता है ना, आपके defensive captain आपके Granit Xhaka है, आपके attacking captain Odegaard है, तो वहां से you have those two people who are kind of managing where people are positioned, और वही I think the difference has been for Arsenal. But this is also a very good point. Arsenal real test hasn't come yet, because सबको पता था they have a fairly easy draw in the first 4 matches. लेकिन
again, on paper it's easy, it's very difficult to actually follow it. हमारे लिए भाई Leeds on paper wasn't too difficult. हमें पता है क्या हमने किया था. So I think you have to give the credit. Arsenal had a decent performance, just not finding the final ball initially, but you need luck to win games. Yeah, fair enough. Yeah, there was actually a wicket, exactly, for Odegaard in the first game, and Gabriel got a scrappy goal. In fact, Gabriel का जो goal था, it went to VR. Shrey, I think this one तो देना पड़ेगा ना. It was a goal, right? Definitely. I think this was a goal, Ankit. But I think इसमें मैं नहीं कहूँगा. I think it was a goal and a good victory for them. And I think Odegaard is really playing well, Ankit. Like, he's showing his true colors now. But let's see, can he keep it consistent now? In my opinion. Yeah. Well, I don't know, unnecessarily relying on Saka. I generally feel that Arsenal की जो attacking play है ना, वहाँ पर the floating forward positions of Odegaard and Saka kind of helps for them. And of course Saka also sometimes just sticking to the byline वो भी help करता है काफी, especially the fact that जब Tomiyasu is not 100% fit to play, तो वहाँ पर Saka is very important. Still not convinced with Ben White right back, वही है exactly, क्योंकि Tomiyasu is not 100% fit starting every game and completing 90 minutes, इसलिए maybe Ben White is continuing. Also the fact that Ben White has been doing well until now, but वो ये माना against maybe like I'll just put across maybe like a proper left winger, a top left winger, like maybe a Zaha or maybe a Sterling, that is something that ज़्यादा test आएगा. You can argue that. So let's see how it does. Absolutely, let's see. Has Chelsea's real test come? Who Spurs? Well, you have to say Leeds was a proper test. Yeah, मतलब you have to give credit. Don't go by the name Matata United. भाई लीड्स ने जो खेला था लास्ट मैच में ना, इतना, और भाई लीड्स ने हगा था कल. आई हैव टू से नॉट हगा था रियली, लेकिन आई डिडंट एक्सपेक्ट लीड्स टू डू दैट बैड एज वेल. ब्राइटन इज ब्रिलियंट एज वेल, लेकिन for me Leeds were really up for the game. एक होता ना कि extra motivation थी against Chelsea, and that was very clear to see for everyone. लेकिन again a lot of discussions around Premier League. भाई सब लोग please like the stream भाई, और लोग आ सकते हैं definitely. We are just over an hour mark. We'll finish the stream in a few more minutes. लेकिन सब लोग like कर दीजिए. Certainly we could have had more people, but hopefully we can have more people now as well. If you can like, share and subscribe my post as well as the stream, and of course do not forget to subscribe even to Serie FC भाई, इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, ये भी अच्छा knowledge रखते हैं. So please give him love as well. Elneny was better than expected, but still not top quality. Wasn't able to break press and distribute the ball. Also heavily dependent on Thomas Partey, I feel. Yeah, fair enough that. By the way, कल Zinchenko भी missing थे, so I think that was also missed. So you have to give Arsenal the credit there. Despite not having Partey and Zinchenko, भाई, they still manage and midfield. हमें गुरुजी के साथ हमने डिस्कस किया था लास्ट स्ट्रीम में ही that by chance अगर Partey नहीं है तो they'll have Zinchenko coming in midfield और Xhaka can play a steely role. लेकिन कल दोनों ही नहीं थे, तो फॉर दैट एल्नेनी को देना पड़ेगा, बिकॉज़ ही केम फॉर अ गेम और फिर भी ही डिड द जॉब. अगेन फुलम थी, बट लेकिन मित्रोविच वाज सो डिसअपॉइंटेड यार. ही और बाय द वे एफपीएल क्विकली बात कर ले भाई, एफपीएल में क्या सीन चल रहा है आप लोग का? श्रेय कहां हो आप? आई थिंक ये वीक मेरे लिए फिर भी आई थिंक मच बेटर गई है, क्योंकि स्टर्लिंग कैप्टन थे. बट उसके अलावा आई प्लेड अ लॉट ऑफ पैथेटिक थिंग्स. मैंने इस वीक क्या करा, मैंने -8 पॉइंट्स लिए और उसको कवर करने के लिए मैंने बेंच बूस्ट लगा दिया. बेंच में मेरे थे टारकोस्की और रॉन्डन. किसी ने कुछ भी नहीं करा ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ. मेरी स्टार्टिंग 11 में भी कुछ नहीं हुआ, बट येस स्टर्लिंग कैप्टन थे तो उसके मुझे 24 पॉइंट मिल गए और एलेक्जेंडर आर्नोल्ड के 15 पॉइंट मिल गए. तो वहीं से एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स मिल गए दैट कैन सेव मी फॉर दिस वीक. नो वन कैन सेव मी. ये मेरे पॉइंट देखो आप, मतलब हद हो गई यार, हद हो गई है. टेरेबल है. यहाँ पर मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अगेन एफपीएल लक का भी होता है भाई काफी. कौन बताएगा भाई साला बैक टू बैक खराब करेंगे. यस आई हैव स्टिल ट्रिपियर लेफ्ट टू होपफुली स्कोर सम पॉइंट्स फॉर मी. वॉटकिंस है, सॉन है, होपफुली दे विल स्कोर सम पॉइंट्स फॉर मी. लेकिन भाई मतलब व्हेन साला वाज नॉट इन द टीम ना, मतलब यू नो व्हाट साला वाज डूइंग. I'll show you all, just wait for this. साला आराम से नाच रहे थे भाई. पता नहीं यार, साला जग जा थोड़ा. लिवरपूल आई डोंट वांट सक्सेस, बट साला आई वांट टू सी योर सक्सेस, क्योंकि मैंने काफी एक्सपेंस करके आपको रखा है टीम में. लेकिन क्या कर सकते हैं. रॉजर्स और लैम्पार्ड विल बी सैक्ड फर्स्ट. वेल, व्हाई वुड लैम्पार्ड बी सैक्ड यार? आई डोंट थिंक सो लैम्पार्ड विल बी सैक्ड. 1-1 था, बट यस they should have won the game. Having said that, why they don't have their proper main center forward available. Abhi, I think Mope wasn't 100% fit to start. So they are having players, and if they are able to keep Gordon, I think that they will be in the relegation zone, लेकिन they might just escape it, क्योंकि उनके पास एक स्टील है. And why I'm saying that CFC Blues, क्योंकि हाँ, we have played, you as in you are a Chelsea fan, you know that we played against Everton. That match wasn't easy. As much as we won that game 1-0, I think Everton arguably deserved to get a point out of the game.
इतना easy नहीं था जो आप सोच रहे हो. Iwobi has turned into a midfielder just like Joelinton has turned for Newcastle. तो I think काफी लोग वही बोला चलते ट्रेन में कूद जाते हैं बस. That is what happens. Because Everton last season जो हुआ था, because Lampard leaks goals towards the end of the Chelsea season. Actually, if again maybe on the other hand you might say मैं थोड़ा biased towards Lampard. I don't know. For me, it's maybe the middle ground. I think they'll still be fine. But हाँ, Rodgers का बता सकते हो because despite यार Chelsea being 10 men, Rodgers, Leicester being 11 men, Rodgers probably has not commanded that kind of एक है ना drive from the team recently. तो क्या बोलोगे Rodgers is best to be sacked? आई थिंक या तो रॉजर्स होगी या स्कॉट पार्कर होगी. सैडली आई थिंक ये दो मुझे लग रहे हैं जो मोस्ट लाइकली पहले सैक होगी. आई थिंक रॉजर्स का मोल है ये नहीं कि सैक करना चाहिए लेस्टर. आई थिंक वो ब्रोक हो चुका उनका रिलेशन, क्योंकि इस साल में मनी नहीं मिले स्पेंड करने को. लेस्टर फाइनेंशियल ट्रबल में है. आप अपने कैप्टन लूज कर चुके हो कैस्पस माइकल, अब आप फफाना लूज करने वाले हो. आपके पास सिर्फ 2 सेंटर बैक्स है, अमाटे और इवांस, जो वैसे फिट नहीं रहते. आपके पास प्रॉपर टीम ही नहीं होगी लेस्टर के पास. अब लेस्टर प्लेयर पे प्लेयर लूज कर रही है एंड लेस्टर जस्ट डोंट हैव इनफ अंकित भाई. एंड आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा लेस्टर का, फफाना लूज करा, एंड अंकित भाई में ये भी रिमेंबर करना पड़ेगा कि अब इनको जो फफाना का कैश मिलेगा मार्केट में, ऐसा नहीं होगा कि इनको प्लेयर सस्ते में मिलेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो रिप्लेसमेंट भी ढूंढना आसान नहीं है इनके लिए. अंकित भाई आई एम रियली अफ्रेड अमाटे इवांस के सेंटर बैक से कल भी जैसे मैंने देखा. आई एम वेरी वेरी अफ्रेड. रिकार्डो परेरा आउट फॉर द होल लाइक एटलीस्ट 6 महीनों को तो आउट है, जो प्रॉब्लम है. बिल्कुल आई थिंक अंकित भाई लेफ्ट बैक भी बर्ट्रेंड, हमें पता है पुराना चेल्सी प्लेयर, ही इज आल्सो इंजर्ड, हमें कब पता नहीं वापस वेरी इंजरी प्रोन हो गया वो अभी आजकल. बर्ट्रेंड इज वेरी इंजरी प्रोन. यू आर राइट एब्सोल्युटली. एक फुल बैक नहीं तो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी. प्लस एवंस भी कल इनिशियल मिनट्स में लग रहा था कि ही माइट हैव, ही इज नॉट एज फिट एज व्हाट ही यूज्ड टू बी. सो आई थिंक यू हैव अ पॉइंट. सर्टेनली सोयंचू हैज बीन रियली टेरिबल लास्ट सीजन. तो डिफेंसिवली वोफुल है लेस्टर. तो आई थिंक दैट्स आल्सो पॉइंट. वो ये बोर्नमथ डिफेंसिवली वोफुल. As much as I think Senesi is a guy जो आया है बोर्नमथ फायनोर्ड से, I think he's pretty decent. लेकिन वो ये overall I don't think it's that good anywhere close to what Premier League standards need. भाई 4 game weeks हो गए और yes I know quickly we'll be touching upon basically Bundesliga भी and a little bit of La Liga. लेकिन भाई सब लोग बता दीजिए 4 game weeks में कौन सी थर्ड टीम है apart from maybe a Bournemouth, maybe you can argue Leicester or Southampton, or who's your best 3 to be relegated? For me I would still say Bournemouth, Southampton and Leicester probably will get relegated. I know Leicester is a big call. After seeing the 4 game weeks, मैं बोल रहा हूँ. What do you think, Serie? I think for me, Ankit bhai, right now, Bournemouth is 100% going down. I think Everton and Leicester have too much experience and they won't go down. For me, people will be surprised, but I just want to see more of Leeds. Yes, they have done well against Chelsea, but what they do in other games. Season has started well, but they're still a very, very young side, which do not even have a proper right back because, not right back, I think midfielder in Stuart Dallas has gone. How much the youngsters keep playing. So I have an eye on Leeds as well. I'm still not putting them in that category that people are, the top 10 finish. I don't think so. I'm still very suspect about Southampton because I think with the manager, before the game, rumors are coming that the players have lost their trust. So I think they could be in trouble. And even I want to see more of Nottingham Forest. Yes, Justin Lingard has come, Morgan Gibbs has come, but these are not signings that are 100% keep you up. I think I want to see Nottingham Forest how they are. But yes, I think at the moment, one team I can surely say is Bournemouth. Fair enough. And yes, by the way, talking about other league, भाई अपने बुंडेसलीगा फैन कहाँ पर है आज? बुंडेसलीगा फैन अपने दिख नहीं रहे मुदित, लेकिन और भी लोग हैं pretty much sure. भाई बुंडेसलीगा में कल बवाल मच गया. Finally, Bayern dropped points. Yes, they can drop points as well. Or is it a coincidence or what? Again, Borussia Mönchengladbach. Bayern Munich won, Borussia Mönchengladbach won. In fact, वो हार रही थी, and as always, Bayern Munich came back with a goal, and that was a Sané goal. In the end, I know Mane भी had a couple of goals ruled out, लेकिन I think offside हुए थे. But overall, people, what do you think? When it comes to Nagelsmann, that is the main issue, that sometimes that sudden से एक मैच आता है where Bayern don't turn up. Would you say that, or tactics? Would you say एक जन जो काफी important रहे, talk about Golden Boy in Europe जो recently हम cover किया था on channel, Musiala. So I think जब Musiala शुरू नहीं करते ना, I can see Bayern having not that fluency, which is a very strange thing to say. But Bayern Munich, कल भी, if I'm not wrong, Musiala did not start, और Bayern Munich आगे. I don't know it's any coincidence. I think Musiala came on the 67th minute और फिर उन्होंने assist लिया. If it was for Sané, yes, it was Sané. So you have to say it is probably Musiala is the main man for Bayern Munich आज season में, along with maybe Mane and Sané. लेकिन maybe you have to say that आपके बाकी players have to turn up in certain games because yes, they are looking the best side. After the Champions League draw, सब लोगों ने बोला था Bayern Munich are the favorites, despite being tipped with Barcelona.
फिर भी सब लोग बोल रहे थे बायर्न म्यूनिख. After this performance thing might change, I don't know. आप लोग बोलिए in the chat if you know, but yes, all the credit has to go to Sommer. Yes, Sommer has had what I think unbelievable double digit number of saves or something like that directly. Bhai Sahab is a brilliant man. Again, Jan Sommer, Manchester United fans, I know that you have linked to Dubravka from Newcastle. He's going to be coming to Manchester United. Lekin really, it probably should have been Sommer, or maybe he plays better with the ball than a David Dia. You can argue that, right? So fair enough. And 11 saves, CFC Blues confirmed. Thanks, CFC Blues. What Crystal Palace is to Man City, Mönchengladbach is to Bayern Munich. Fair enough. Football included 20 saves. Okay, I'm not sure. I think I read somewhere around 14 saves, but koi nahi. Why is Upamecano playing over Delict? By in my opinion, Upamecano is probably more comfortable with the ball. ठीक है, he is known to be playing with the ball very very comfortable. जब Leipzig days में थे तो he was supposed to be that. Plus the fact that remember he's coming from Leipzig. Is that a connection? Come on, Nagelsmann यार, तो थोड़ा connection तो होगा ही ना. तो Upamecano खेलेंगे, और the fact that in terms of Bayern Munich का tenure में he is senior to Delict, so that's the only reason. लेकिन in my personal opinion वो लोग करेंगे रोटेट. सिंपली पुट वही करती है क्लब्स लाइक बायर्न म्यूनिख होगी, मैन सिटी होती है, दे विल रोटेट between Upamecano, Hernandez and basically Delict. They will be rotating for me. लेकिन हाँ, मैन सिटी में आप देख रहे हो ऑलरेडी स्टोन्स, लापोर्ट एंड डियास रोटेट किए गए थे लास्ट सीजन भी, इस सीजन भी यही होने वाला है. प्लस आकी भी है वहां पर. अरे मुझे तो आ गया भाई, जैसे हम बायर्न म्यूनिख की बात कर रहे थे यार, मुझे क्या हुआ भाई, बायर्न म्यूनिख ने फाइनली ड्रॉप कर दिया पॉइंट्स, तो क्या हुआ, मतलब दैट इज नॉट इन गुड मूड. नो प्रॉब्लम, बिग अप एब्सोल्युटली. लेकिन मुझे you tell me what was missing in yesterday's performance, or was it simply the fact that Sommer did brilliantly behind goal? Marcus Thuram also had a brilliant game for Mönchengladbach, and Sabitzer is finally getting into his groove. Complimenting, ये तो मैं agree करता हूँ 100%. I think उनकी जो midfield है ना बायर्न म्यूनिख की, I think arguably भी नहीं, it is probably the best in the world. That is how good they are. मतलब आप देखिए वहां पर किमिक है, सबित्सर है, यू हैव अ गोरेत्स्का कम बैक आई बिलीव, देन यू हैव अ ग्रावेनबर्ग, इतने सारे लोग हैं. नो वंडर कॉनराड लेमर फ्रॉम लाइप्जिग इज नॉट मूविंग. लेकिन कॉनराड लेमर is also linked to Liverpool if I'm not wrong. तो हो सकता है he might go to Liverpool. Let's see about that. Upamecano has a good build, but he can easily be shut off. Not the best aerially as well, not convincing at all. Yes, बिल्कुल. चलो यहाँ ले लेते हैं डेरिन का भी क्वेश्चन. Todd Bowley ready to pay out Ross Buckley contract. अरे भाई सच में डेरिन सोर्स बोलिए. मतलब I understand the guy has not been good, but Shrey, क्या लगता है? Is there any way to utilize Ross Barkley in this formation that we are trying to play with the initial with position 4-3-3 or 4-4-2? Do you think we can fit Ross Barkley in this format? I think in 4-3-3 is probably the best fit, right? जो सारी के अंदर था. I think Ankit bhai, he's much suited to 4-3-3 shape, but I think I do understand that it's now time for him because he's not impressed. But I think there are so many English clubs that we're ready to pay 5 or at least 10 million for him. I 100% can guarantee that. So paying out his contract would be a wrong decision. I think the problem is the club wants big money, like they got 15 million for Emerson from West Ham. I think either Todd Bowley and the negotiation team have to reduce their price. Why are you trying to get a player out of his contract? Get the 3 million, 4 million, something to the club. Like when Marina Ganovoski did with Giroud, where we got at least 2 million out of the for AC Milan, I believe 1.5 to 2 million. So I think that this is wrong, and I do believe that Chelsea have to either sell him or then keep him as a backup. Billy Gilmer is also rumored to be leaving, so that will leave us short on midfielders as well, especially when Kante Kovar always injured at the same time. So that can be a bit of concern. By the way, कल एक Real Betis का मैच था. I know La Liga में we didn't have Real Madrid or Barcelona का match, which probably tonight as well as there'll be a lot of matches. By the way, yes, people tonight and tomorrow night. Barcelona का मैच है, Real Madrid का मैच है, AC Milan का मैच है. Lot of matches are remaining. Tottenham का मैच है. तो काफी सारी चीज हम कंटेंट के साथ आने वाले कल भी वापस. लेकिन अगेन डोंट फॉरगेट वी आर हैविंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. आज बहुत ही बड़ा मैच है. यस, कल एक सरप्राइज रिजल्ट हुआ which will be talking on the other channel. But we will be live around I think before 7 p.m. itself for the watch along, so be there. मैंने setup करना है page, so don't forget, mark your calendar please. अभी ही okay, we don't want deadwoods at the club. Yeah, you can say that, but again for me the fact is हमें अगर नहीं मिल रहा De Jong, ठीक है, think about it, and the fact that अगर Loftus-Cheek continues to play as a right midfielder or right wing back, तो maybe there's an argument कि the fact that we are one midfielder short. So in the squad, I'm saying, I'm not saying that basically start करेंगे, not even on the bench. लेकिन in the entire squad, in a season, you probably need with 5 substitutes, you probably need in a World Cup year around 25-man squad.
I think that maybe Ross Barkley can be part of it. Yes, doesn't add value at all. You can say that, but we have so many injured midfielders like Kovacic, like a Kante, like even a Loftus Cheek. So वहाँ पर is the only reason why I'm saying that we might just keep him. लेकिन वही, if you're paying too much salary, Todd Burley has a point if that's true. या सरप्राइज नहीं थी, पिटाई थी वो भैया. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बार्कली इज टेरिबल भैया, कम ऑन. हाँ टेरिबल है, लेकिन एक मैच था लास्ट सीजन अगेंस्ट साउथहैम्पटन वेयर ही पुट द बॉल, आई थिंक फॉर वर्नर वाज इट, एंड गोल हुआ था, एंड आई रिमेंबर दैट एक साइड में पास किया था. तो आई थिंक he can have an impact of the bench in a Carabao Cup at best. That's what I'm saying. Don't get me wrong, CFC Blues, because we might miss midfielders at all. So I'm saying instead of like just buying the contract outright, just keep him. That's what I would say. Matlab, again, he's not someone Joe. He has been, has Barkley been known to be a bad boy behind the scenes? Yes, he maybe in terms of English, kind of lifestyle he is. Lekin in terms of dressing room, I think he's okay, right? Shrey, मैंने तो कुछ सुना नहीं ऐसे he's a problem in the dressing room or something like that. नहीं, मैंने भी नहीं सुना कि कोई प्रॉब्लम हो. हाँ, बीच में कुछ बार क्लब्स के रिगार्डिंग मतलब नाइट आउट्स एंड वो सब आई थी रिपोर्ट्स, मेरे को याद है लैम्पार्ड के टाइम थी, बट उसके बाद भी यानी अपोलोजाइज एंड इवेंट है. तो अभी रिसेंटली ट्यूकल के अंडर तो मेरे को ऐसे कोई नहीं याद है जहाँ पे बाकी को ऐसे क्रिटिसाइज किया हो, कुछ रिपोर्ट आई हो. तो आई थिंक वो कहना गलत होगा. हम बस ये कह सकते हैं शायद एबिलिटी के मामले में एवर्टन में जैसे रॉस बार्कले थे, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यंगस्टर जो मैंने देखा है जिस तरह वो खेल रहा था. कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप कह सकते हो एटीट्यूड प्रॉब्लम है जो इसने कॉज कर दिया. आप ये भी कह सकते हो जो उसने इंजरी सफर करी थी उस टाइम पे, शायद उसने सैडली इंजरीज ने सिर्फ बार्कली जैसे प्लेयर्स का करियर एंड नहीं करा, इंजरीज ने विल्शियर जैसे प्लेयर्स का करियर एंड करा है. एंड वो एक लाइफ एंड पार्सल है स्पोर्ट्स का, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. मुझे कोई गंदा इन्फ्लुएंस लगता, आई हैव नो प्रॉब्लम विद बार्कली एज वेल. आई थिंक अगर वो जाएंगे भी, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, इट डिड नॉट वर्क आउट. मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि ऐसा प्लेयर जिसकी मार्केट में हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसका पे आउट करना कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग मिस्टेक. Let's see. मतलब वो time will tell. But again, a lot of transfer stories. भाई literally वो 3-4 दिन रुक गए भाई ट्रांसफर्स में. श्रेय what and again chat आप लोग भी बोलिए, next 3-4 दिनों में सबसे बड़ी ट्रांसफर कौन सी होगी, which is going to be the big news in last. मतलब every time कुछ ना कुछ होता है भाई. लास्ट ये समर ट्रांसफर विंडो, रिमेंबर आफ्टर अ पोस्ट कोविड टाइम ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो. तो which is going to be the biggest transfer in the next 3 to 4 days. एक तो बर्नार्डो सिल्वा तो रह रहा है, he is not going anywhere. He's staying on the city. De Jong, there's a slight हाँ फेब्रिशियो ने आज बोला है by the way just for people out there कि डियोंग अगर जाएंगे ना तो चेल्सी आर स्टिल इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे नहीं लगता जाएंगे. आई थिंक ही इज गोइंग टू स्टिक आउट टू बार्सिलोना, रिड्यूस वेजेस. लेकिन आप लोग बताइए which is going to be the biggest move in the next 3 to 4 days? डियोंग to Bayern? नहीं, I don't think so. What do you think? I think Ankit bhai, it's going to be interesting. I think one is going to be Anthony and Ziyech saga, because United fans, I'm very sorry to report to you, but Chelsea are trying to get the biggest money possible as Ziyech. Chelsea are demanding 35 million. They don't want to pay it because Chelsea just 3 weeks back, Ankit bhai, were asking for 20. Now because they are getting 100 for Anthony, Chelsea have said, why? Pay us 35, yeah. So I think that's where the saga could be interesting, because if Ziyech doesn't go to Ajax, Anthony is not coming to United. So that could be a transfer rumor to look out for. United fans might be hoping on the final day, and then Ziyech stays at Chelsea. That could be a thing as well. And another Ankit, I think I'm looking forward to seeing what happens to the Gordon deal as well, because that could be interesting as well. Because if Everton at this point sell us Gordon, I think they will be taking one of Broha or Gallagher. So I think that could be very interesting. Yeah, as in after yesterday's performance भाई गैलेगर को ले ले तो भाई, इसलिए मैं अगेन रॉस बार्कली का जो बोल रहा था ना, स्क्वाड में टेक्निकली है, एंड अगेन स्ट्राइकर में भी ब्रोहा जाता है तो बैकअप का बैकअप होने के लिए यू हैव बादशवाई. तो टेक्निकली आई वोंट डिस्काउंट दैट, यू राइट श्रेय, एब्सोल्युटली. बट यस अगेन बिफोर लीविंग बाय पीपल, लेट्स लाइक द स्ट्रीम भाई, सब लोग लाइक कर दीजिए. और अगेन भूलना मत, हम वी आर लाइव व्हाट लिटरली within 4 hours from now we are live, and that is going to be on Almighty Sports Plus. 7:15 baje we are live, so don't forget. We'll be joined of course hopefully with Chirag as well as with Shrey if possible. Lekin we'll have I think Guruji bhi shayad join karenge, unhone bola थोड़ी देर के लिए, तो we'll have fun there वहां पर भी absolutely. लेकिन हाँ, Lampard is saving us from taking Gordon. Let's see. Absolutely yes, people, the membership is open for those of you who are new, absolutely, and we are monetizing both the channels as well. Oba for Fun at Chelsea, Anthony Gakpo to Manchester United, one midfield to Liverpool, Gusto Foyt to Barca will happen. Okay, fair enough. Nice. चलो on that note, let's end the stream. And again, आप जाने से पहले ये भी बता दीजिए, for you
which is the match that was the best to watch, even as a neutral, or it might be your club's match in this Saturday, or of course it can be a game that you're looking forward to from Sunday as well. So do comment in the chat, or see you within 4 hours on Almighty Sports Plus, because it's a big game. And of course Chelsea are back with a win, but congratulations to all winners. Hopefully, as in we'll have a good 3 to 4 days of transfer window, और फिर ये बात करेंगे वापस से, we'll be covering that on football. लेकिन हाँ, we'll be covering obviously the Sunday content होने वाला है on Monday morning. Before that, let's see you on Almighty Sports Plus. Chalo, and everyone, shout out to Serie as well. Please subscribe to Serie FC. It's always linked in the description below. It's easy to remember. Please subscribe उन्हें भी, और like करिए stream को. चलो, thanks, bye.